proceed towards the welcome address. So before I invite Honorable Provost Parimal Vyasdi to share the welcome address, we are blessed to have him, an experienced academician, researcher, lot of expertise in management, but at heart, he is a teacher. Namaste, good morning and Suprabhat. On behalf of the Oro family, I am pleased to welcome each one of you to Oro University. Let me take this opportunity to present before you the bird eye view of the Civil India 20 Conclave themed on Education for Life and Global Citizenship that the Oro University is hosting with blessings of Mata Amritanandamayi Devi, the Honorable Chair C20 India as nominated by Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, and founder of Mata Amritanandamayi Math and Amrita Vishwa Vidyapitham. I formally welcome and seek blessings in absentia of Honorable Founder President Sri H.P. Ramaji, with whose vision and blessings the Oro University was established in 2010. We welcome Dr. Premaji, Coordinator, India C20 Amrita Vidyapith, Dr. Janti Raviji, Secretary, Auroville Foundation, our own beloved Oro family member, our Margdarshak, source of inspiration, Padma Bhushan ji, Professor Kapil Kapoor ji. So we appreciate your support and guidance. We cannot think of any event without your auspicious presence at Oro University. Let me take opportunity to appreciate the presence, support and guidance that we have been getting from our own Sri Suresh Mathurji, Chief Operating Officer, and Sri Nayan Bankarji, Chief Financial Officer, Sri Sanjeev Sahaji, Member of Governing Body of the Oro University and President, Gujarat Chapter of Mata Amritanandamayi Math, Ahmedabad. Let me place on record, he is the driving force of this C20 Conclave, which we have been able to organize at Oro University. Other distinguished invitees, media persons from print and channels. We also acknowledge the presence and efforts put in by Dr. Kiran Singh, Director CELSI and Director of the C20 Conclave, Dr. Monica, Associate Dean, Heads of the school, my colleagues of Oro family, staff of Oro and Oro Hotels, Professor Amrish Mishra ji, the Registrar, and officers of Oro University, my beloved staff volunteers, ladies and gentlemen. Let me try to, take this opportunity to welcome many distinguished invitees because of whose support, because of whose presence we have been able to organize the Civil India 20 Conclave, which fine-tunes with the vision and mission of the Oro Vishwavidyalaya. The inauguration will be followed with the plenary session where we have with us Dr. Hindol Sengupta ji, award-winning author and historian, and he would be enlightening us on educating citizens about the heritage and ancient culture of India. We would be blessed with the presence of Padma Shri Vishnubhai Pandya ji, the former president of Gujarat Sahitya Akademi. He would be speaking on shifting the paradigm from job to service. When we are talking about Civil India 20, under G20, where the focus is on various social issues being confronted by not just our country, but the whole world, I take this opportunity to appreciate the guidance and support that we have received from Amrita Vishwa Vidyapitham
and we have planned 2 panel discussions of a paramount importance. The first panel discussion would be on life skills for global citizens with the 21st century. I think there cannot be a better area for discussion under C20, and I appreciate the presence of Brahmachari Sri Ramananda Mitraji, who would be moderating this panel discussion. Our own beloved former provost and Professor Velurkarji, who is with us. Sir, thanks for coming from Mumbai, who is currently the Vice Chancellor of the Atlas Skill Tech University. Mrs. Kalyani Rai, she is with us, President of All India Women Conference. I know about the activities. I had an occasion to be a part of it. And my own beloved colleague, Dr. Nirja Gupta ji. Thank you, Kiran, for creating this opportunity to meet Nirja ji, where she is currently Vice Chancellor of Sanchi University, Buddhist Indic Studies, from Sanchi. The second panel discussion would happen on resilience for sustainable living. As a teacher, let me tell you, the challenge before this country is to, fine-tune 2 major areas. One is in implementation of national education policy. One is outcome-based education. Anything and everything that we do, we try to measure it in terms of output. This is a paradigm shift that we are envisioning. And second is, how can we fine-tune it with the accomplishment of the Sustainable Development Goals 2030. So this is a very appropriate platform where we will be having a discussion. It would be moderated by Dr. Premaji. She is the coordinator of India C20 Amrita Vidyapit, and we would be having a presence of Sri Kirti Shah, President India Habitat Forum. I'm very happy to share with you, when I'm talking about NEP, we have a very distinguished Vice Chancellor, a very senior Vice Chancellor, who was a part of the National Education Policy Committee draft. He is with us. He is a source of inspiration for me. Professor T.V. Kattimaniji, and he is an icon of tribal education that this country is talking about now. That is the contribution that Sir has made. He is with us. I welcome Professor Kattimaniji also. Currently, he is the Vice Chancellor of Tribal University of Andhra Pradesh. Sri Abhay Mangal Das ji, founder and director of House of MG, Ahmedabad. And when we talk about the society, we have with us a scientist, educationist, and a social worker, Dr. Jyoti Chotaiwale ji. We welcome you, ma'am, to this event of C20. I'm very happy to share with you. It's difficult to get people, now come in person and then inspire us and guide us. But then Dr. Kiran Bedi ji, she has a very close connect with Pondicherry. And you know that this university has been founded by the vision of Sri Ramaji, where we follow and seek blessings of Sri Aurobindo and Divine Mother. So Dr. Kiran Bedi ji, former Lieutenant Governor of Pondicherry, she would be the honorable chief guest of our valedictory, and our own, I would call him a part of Oro family, Sri Dinesh Dasaji, who is the former chairman of the Gujarat Public Service Commission, would also be, addressing all of us in a valedictory. I'm very happy to share with all of you that along with C20 Conclave, we are also simultaneously organizing a youth conclave. And we appreciate the presence of Dr. Bhavna Joshi Puraji. She is very much here. And from Amrita Vishwavidyapit, we have Brahmachari Dr. Siv Subramani Krishnamurti ji, Sir Swamiji. Keep your blessings on us. And Brahmacharini ji, Amrita Mika Chaitanya ji, Nishima ji, and Meenakshi ji from Amrita Vishwavidyapitam. Let me take this opportunity to share with all of you that Oro University has been founded by the Rama family, as envisioned by our Honorable Founder President Sri H.P. Ramaji, inspired by the vision and teachings of Sri Aurobindo Ghosh and the Mother. And we aim to impart
integral education. When it comes to education in our country, Mahatma Gandhi ji, Sarvapalli Radhakrishnan ji, Rabindranath Tagore ji, and one name I'm very happy to share with all of you, Kattimani ji, yesterday, when he visited our campus and then had visited the C. Aurobindo Integral Life Center, CELSI, which is the soul of our university. He shared that couple of meetings that this NEP committee had on and off, the discussion centered around C. Aurobindo. Sir, I'm really thrilled to listen to it. I thought, let me share this with you, that when the NEP committee was discussing about the draft, we cannot think of education or integral education per se without the blessings of C. Aurobindo. And I'm very happy to be a part of an institution. Or a university, provides internal education, skill sets and values that are needed to lead a more purposeful and fulfilling life. I think that is how this is a wonderful opportunity for our family to host this C20 conclave. Let me share with each one of you, at the university we follow 12 living principles. Very interesting. We have principles, but we call it 12 living principles. Whether education, whether is a means or an end. I think I say that education, it's a process, never ending process. And at Oro we follow 12 living principles, also imbibed as core values to bring transformation in the lives of our students. And these 12 core values are sincerity, humility, gratitude, perseverance, aspiration, receptivity, progress, courage, goodness, generosity, equality, and peace. We expect and humbly request distinguished experts who have gathered here in the C20 conclave to guide and enlighten us, our team of faculty, on how we can help or how you can help us imbibe the curriculum and pedagogy of these 12 living principles that we follow at Oro University, and how it can become a part of life. At times, when we talk about our university, the reflection that we get is, just 1200 students. But let me share with you the vision of our Honorable Founder President is that when we admit any student, we take a responsibility for the transformation in his or her lives that we want to aim or we want to make it. So I would request all of you to guide us. Let me take 1 minute and I would like to share with all of you. Before the National Education Policy even thought of, when the university was established in 2010, with great pride I say that in order to impart integral education, we teach compulsory courses of Science of Living. What a wonderful name, Science of Living. And we also teach, these are all compulsory courses that we teach in each of the semester at the Oro University. And we also teach foundations of Indian culture. I think now you find Indian knowledge system as become a buzzword. I remembered only one institution in the country called Bharati Vidya Bhavan, where I was associated with for long than 10 years. There we used to teach. It was a compulsory course called Cultural Heritage of India. My journey as a teacher in 39 years, I have not come across a university of this stature. And let me tell you, the core of the Oro University is experiential learning. So we are not after number game. Oro University is strongly grounded in value education. We believe that education must not be limited to purely academic learning, and education is an indispensable part of our life. In an era
characterized by a new explosion of scientific knowledge and a growing area of complex societal problems, it is appropriate that curricula should continue to evolve, perhaps in radical ways. And that is why probably in C20 and G20 education, and even in sustainable development goal, there is a strategic focus on education. An education system that, along with professional and materialistic success, teaches an individual how to live life meaningfully, inculcating values, empathy, acceptance, understanding, and the like, to be better prepared for all life experiences, both pleasant and otherwise. Let me take this opportunity to share with you. Oro University aims to deliver what we call it as precisely Oro experience. And these Oro experience is created, it is conceived, it is created, it is built, and it is delivered through what we call as 4 key aspects. The physical education, where we focus on team building and collaboration. Vital education, I think, is extremely important, where we focus on emotions, feelings, and relationships using music, arts, drama, and sports. Mental education, through sharpening observation, analytical skills, decision making, and above all, skills in creativity. And the most important one, spiritual education, a discovery of inner being and consciousness. So at times I do say that the Oro University is a spiritual laboratory for the education. We have put up an exhibition for the event, and as you all know, that the C20 CONCLAVE's motto is, "You are the light in a universe, each one of us." And at Oro University, we follow this in word and spirit as shown by the Mother and Sri Aurobindo. The exhibition showcases the best practices carried out at Oro University for integral education, sustainability, culture, innovation, community outreach, and of course, the implementation of the National Education Policy 2020. And results that we have received by implementation of the outcome-based education at Oro University. I firmly believe that the curricular aspects must include citizenship, so spiritual values, yoga, meditation, sports, culture, heritage, nature, and environment. We must focus on inculcating service orientation through the engagement and participation of students in varied extension, co-curricular, community, and outreach activities. We must inculcate teachings and learnings from a life of inspiring and successful individuals. And we need to create what I would call it as centers of well-being in the universities. Let me conclude by raising 2 critical questions before this intellectual gathering. What knowledge, skills, attitudes, and values will today's students need to thrive and shape their world? How can instructional systems and higher education institutions can effectively develop these knowledge, skills, attitudes, and values? To conclude, I understand that our students must be taught to value common prosperity, sustainability, and well-being. They need to be responsible and empowered. They need to place collaboration above division and distribution, and sustainability should go above the short-term gains that they look for in their life. We are confident that recommendations that would evolve at Oro University in C20 CONCLAVE shall get integrated in the C20 recommendations on various social issues, including education. And finally, it would also be a part of the report and recommendations to be submitted by the C India 20, because the coordinator is with us. It would also get included in the recommendations that we are going to submit
on education under G20. So once again, on my personal behalf, on behalf of the Oro family, on behalf of the President and the Governing Body and Academic Council and the staff and Oro family, once again I take this opportunity to welcome each one of you and convey our sincere thanks and deep sense of gratitude to each one of you, and would humbly request that whenever we conduct any such event in future, please keep your blessings on the Oro University. May God bless all of us. Thank you. Thank you one and all. We are thankful to you, Professor Parimal Vyas, for your inspiring words. The reminder that Oro University is committed to those 12 living principles in word and in deed. And we will carry those 2 questions that you asked throughout the deliberations of today. As we go ahead now, we have the Chief Patron's video address. Our founder president, the founder president of Oro University, the visionary, the global entrepreneur, the devotee of Sri Aurobindo and Mother, Sri Hasmukh H.P. Rama. He is passionate about inspiring youth of the next generation. He is passionate about the practice of integral education, and he is passionate about holistic development of youth. So what we have for you here is a video address by our patron, our founder president, on the vision of Sri Aurobindo, philosophy and practice of integral education. Distinguished guest, thank you for the opportunity to be part of this Education for Life and Global Citizenship Summit. We are proud and honored to host C20 at Oro University. Today we are faced with crises in all areas of our life as well as in the world around us. International relationship, national crisis, economic and social crisis, religions, family crisis, and most importantly, the individual internal crisis where we don't know the right things to do anymore and are torn between conflicting demands. This prevalence of crisis is increasing. In fact, in the last 50 years, we have seen a greater intensification of crisis than in last 500 years. Education is also in crisis, yet education holds the key to overcoming the crisis all around us. What is required is a different mindset, a new attitude and approach to education. The education system began with the development of industrial age and the need for qualified workers. It was a time of mass production of goods, assembly lines, machineries, and factories. This led to a standardized education system in which the child was seen as a raw material on an assembly line to be molded in accordance with the requirements of industry. In this mass production approach to education, the needs of society superseded that of the student. The aim of educational system was to serve as a recruitment system for industry. This market-oriented society slowly began to shift towards a more human-oriented society as we enter the era of information technology. The information age has provided easy access
to information through tools and technologies such as internet, computers, and now artificial intelligence. In the past decade, the pace of technological change sweeping across the educational institutions, businesses, and society has been exponential. Yet, remnants of industrial era remain deeply embedded in our educational system. We still view the student as a raw material to be shaped through lectures, exams, diplomas, as per current educational structures. In doing so, students have lost their sense of identity, of self-expression, freedom to explore based on their aptitude and interests. They have lost their motivation for self-discovery and inner development. As an accidental educationalist, I must point out in all humilities that we have the responsibility to promote a radical paradigm shift in education. The time has come to prepare students integrally in all aspects of human existence: mental, emotional, physical, and spiritual. In this way, the full purpose and scope of human life can be cultivated in the students, and thus their contribution to the nation and the humanity. We, as educators, must recognize the uniqueness of each student and create an ecosystem that supports and encourages each to develop and realize his full potential. The faculty is to be facilitator to awaken such potentiality in each student through experiential learning. They are to be mentors, guides who foster and nourish the inner and outer development of the student. Parents expect us to deliver values of life and guide students on how to manage their emotions, develop their character and personality for a successful and enlightened life, to lead their life integrally and socially, to be responsible leaders. Industry and society also expect us to prepare students with skills and competency, with experience required, learning to be proficient in their chosen profession or field of work. What is the paradigm shift that we must undertake in education? Sri Aurobindo says, the central aim of knowledge is the recovery of self, of our true self-existence. Now, this requires the integral development of the student on all levels of being: mental, emotional, physical, and spiritual. Such development covers the entire range of comprehensive education. A true and living education requires the enhancement and widening of the student's mental faculties, such as concentration, silencing the mind, memory, imagination, discernment, reasoning, and critical thinking, and mental receptivity. A true and living education inspires the vital being to manage and develop the life force, the emotional behavior and feelings
through multifaceted creative expressions in such fields as art, music, dance, poetry, and brings a heightened appreciation of beauty, a sense of joy, love, and compassion for all with equanimity. A true and living education also includes the body, its training and development to support the mind, the heart, and the spirit. It is necessary for the formation of good habits, discipline, teamwork, agility, flexibility, strength, and endurance. A true and living education places the great importance on the process of self-discovery and spiritual progress, which opens the student to universal values, values we refer to at Oro University as the 12 living principles, and they are sincerity, humility, gratitude, perseverance, aspiration, receptivity, progress, courage, goodness, generosity, equality, and peace. Mother said, to know is good, to live is better, to be, that is perfect. By opening to these 12 universal values and the development of all levels of being, the transformation of consciousness becomes possible. At Oro University, we are embarked on the grand vision of Sri Aurobindo for integral and transformational learning for the future leaders of humanity. And in conclusion, let me share with you Sri Aurobindo's prophetic vision for India. The Indian Renaissance is arising, and that must be determine its future tendency. The recovery of the old spiritual knowledge and experience in all its splendor, depth, fullness is its first most essential work. The flowing of this spirituality into the new forms of philosophy, literature, art, science, and critical knowledge is the second. And original dealing with modern problems in the light of Indian spirit and the endeavor to formulate a greater synthesis of a spiritualized society is the third and most difficult. Its success on these three lines will be the measure of its help to the future of humanity. Thank you for joining this very important C20 summit at Oro University. We are thankful to Sri Hasmukh Ramaji. In fact, he calls himself the accidental educationist. I'm wondering what he would do if it wasn't accidental. He has mentioned several critical issues in relation to education and also reminded us of the founding principles of this university. I think I speak on behalf of all my colleagues when I say we are proud to be part of the family of Oro and have the opportunity to reach out to so many people. We have a request now from Manish ji, if he can please play the video message of Amma, and after that we will introduce the next speaker. Thank you. ബ്രഹ്മസ്വരൂപനും ആത്മസ്വരൂപങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മാനവരാശി പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ മനുഷ്യന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത്. തിരിച്ചറിവും തിരുത്താനുള്ള മനസ്സുമാണ് അവ.
ലോകജീവിതം നയിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന പ്രപഞ്ച നിയമം അനുസരിച്ച് മതിയാവും. മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പുറന്നുള്ള നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവസരവും അവശ്രുതിയും ഉണ്ടാകും. മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ കടന്നു കയറുന്ന ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം മനസ്ഥിതിയും മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം ഒരു 60 കുട്ടികളാണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. അവരൊരു 25% ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് വിടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 15%, 20% കുട്ടികളോളം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും. ബാക്കി കുട്ടികളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് വിടുമ്പോൾ പൈപ്പിൽ പോയി വെള്ളവും കുടിച്ച് വൃക്ഷത്തിൽ തണലിൽ പോയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവർ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചവരല്ലായിരിക്കും. 2 വീട്ടിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട്. അവൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും. ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാഗം ബാക്കി 3/4 ഭാഗം കളയുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ മോളോട് പറഞ്ഞ്, കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ്, നീ ഇത്രയും ഭക്ഷണം കളയുന്നില്ലേ, നീ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിളിച്ച് കൊടുക്കുക, ഞാനും കൊടുക്കാം. അവർ 2 ഞാനും മോളും ചെയ്ത്. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെയും 2-3 പേര് അതുപോലെ ചെയ്ത്. അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. ഒരു 15 ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉണ്ടാവുമോ അവരെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവർ ആ ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികത്തിലുള്ള കുതിച്ചുകയറ്റവും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ദുരുപയോഗവും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പടർന്നു പഠിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സങ്കുചിതമായ പരിസ്ഥിതിയാണ് ഇന്നുള്ളത്. മനസാക്ഷിയും മൂല്യബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ തലമുറ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പല രൂപത്തിലും അക്രമങ്ങൾ പെരുകുന്നു. പുതുമ പഴമയെ ചവിട്ടി മതിക്കരുത്. രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ, രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിരന്തര തലവേദനയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികൾ കണ്ടെത്തണം. അട്ടപ്പാടിയിൽ അവർ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ഓരോന്നും വെച്ചാനൊക്കെ പോകും. അവർക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് അറിഞ്ഞും കൂടാ അതിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ നമ്മളെ വരുത്തിയിട്ട് ആ കാട്ടിനിടയിൽ ഓരോരോ മുറികൾ നമ്മൾ കെട്ടുമായിരുന്നു. അവരുടെ സമയത്തിനൊത്ത് എന്തെങ്കിലും മിഠായോ ഭക്ഷണമോ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ വരുത്തി പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് 400 കുട്ടികളുള്ളൊരു ഓർഫനേജ് ഉണ്ട്. അവിടത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് ആകെ പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ ചില ഗ്രാമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരേ മുറിയുള്ളു, പക്ഷെ 4, 5, 6, 7 4 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു റൂമിലിരിക്കുക. തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടും നോക്കിയിരിക്കുക. ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാറായിരിക്കും. അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. ഇപ്പം 4ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പീരീഡ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് ചെന്ന് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പീരീഡ്, 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പീരീഡ്, 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പീരീഡ്. ഈ സാറിന് അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലതാനും. അപ്പോൾ ഇവർ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇവർക്ക് മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവർക്ക് അത്ര കഴിവില്ല. അപ്പോൾ അവരോടൊത്തിരിക്കാൻ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ ഡിപ്രഷനായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അവർ ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ കൊറോണ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുട്ടികൾ വേറൊരു രൂപമായിട്ടാണ്. ആ കുട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാ രീതിയിലും സ്വഭാവം മാറ്റമുണ്ട്. അവർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള പക്ഷേ അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ്റെ തുടക്കമാണ്. ഈ ഫോണെ മാത്രം നോക്കി നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, അത് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ലഹരിക്ക് അടിമയായി. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ കൗൺസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് മാനസിക രോഗത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അവർ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർ മാനസികരോഗി ആകേണ്ടി വരും. പ്രകൃതിയുമായി ഡിസ്കണക്റ്റായി പോകുന്നു, സ്നേഹമായി ഡിസ്കണക്റ്റായി പോകുന്നു, ഈശ്വരമായി ഡിസ്കണക്റ്റായി പോകുന്നു, ജീവിതമായി ഡിസ്കണക്റ്റായി പോകുന്നു. ഈ കണക്ഷനെല്ലാം ശരിയാക്കാനുള്ള മാർഗമായ ആധ്യാത്മ മൂല്യമായി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകും. ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കണം, ജോലി നോക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മനസ്സിനെ എയർ കണ്ടീഷൻ ആക്കുന്നതാണ്. മറ്റേ പുറത്തെ എയർ കണ്ടീഷൻ, മനസ്സിനെ എയർ കണ്ടീഷൻ ആക്കുന്ന തത്വമാണ് അത്. പണ്ടും ഇന്നും എന്നും ഭാരതമണ്ണിൻ്റെ മന്ത്രം ലോകമേ ഒരു തറവാട് എന്നുള്ള ഈ സത്യം മാതൃകാപരമായ ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയ മഹത്തായ അവസരമാണ് C20 നേതൃത്വ സ്ഥാനം. പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ
ഏറ്റെടുത്ത ഈ സംരംഭം ലോക ജനതയെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാകട്ടെ. ആ പരിവർത്തനത്തിന് പുതിയൊരു ദീപനാളം നമുക്കിവിടെ തെളിയിക്കാം. അതിനുള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എണ്ണമറ്റ പ്രകാശനാളങ്ങൾ രാജ്വല്യമാകട്ടെ. G20 എന്ന ഈ മഹായജ്ഞത്തിൻ്റെ ശങ്കുലനാളം ലോകമെമ്പാടും സ്പന്ദിക്കട്ടെ. അടഞ്ഞ മാനവ ഹൃദയങ്ങളെ അത് മലർക്കെ തുറക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ പ്രകാശം ലോകമെമ്പാടും പരക്കട്ടെ. കൃപ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. We are grateful for that simple but meaningful message of sharing and caring. And as we go ahead now, I would like to introduce the next speaker, a very important person in relation to C20, the coordinator for India C20, Dr. Prema Nedungadi. I will just introduce her first, and then I will ask Suresh Mathurji to please come and felicitate her. She is the founding director at Amrita Create. Amrita Create is Amrita Center for Research in Analytics and Technologies for Education. This initiative has been recognized nationally as well as internationally. It has received the Barbara Bush Foundation's Adult Literacy Prize. Dr. Prema is also a recipient of Digital India Award, Best Journal Paper, IT Excellence Award for E-Learning and Education. Her forte is education and health systems. So I believe she will tell us a little more about that. And the large-scale projects that have been taken up by Dr. Prema and her team have reached to remote villages. I think that was reflected in the video that we saw just now. In spite of all this, she also has a prior experience of 15 years in software architecture in the US, and she has also presented Amrita's awards as well as projects at different international forums like UNESCO, and she's on the head of certain expert committees in the government. And this initiative puts together both technology and health, reaching out to vulnerable people across 22 states of India. So I'd like to warmly welcome you, ma'am. Please come to the stage. I would now ask Chief Operating Officer Suresh Mathurji to please come forward and felicitate ma'am, our volunteers. Om Amriteshwariyai Namaha. My humble pranams to the chair of Civil 20, our guiding light and inspiration, Sadguru Shri Mata Amritanandamayi Devi. I welcome Amma's presence to the C20 Conclave at Surat on education and digital transformation and into our hearts. Pranams to all the dignitaries gathered here. I want to sincerely thank Oro University for organizing this. I can see so much synergy between the values of Oro University and Amrita University, and I hope we can collaborate and work together in the years to come. Having studied at Mothers International, New Delhi, in high school, I was also exposed to the education for life with yoga, meditation, and other value systems at that school. India's G20 presidency has the theme Vasudhaiva Kutumbakam, signifying Modi ji's vision for India, where he is talking of one earth, one family, one future. And in response to that, Amma came up with the logo for C20, which is "You are the light." How do we achieve this one family goal, one earth goal?
by each of us becoming the light. So it symbolizes the of hope, self-motivation, and selfless service. It's also a call to every NGO and CSO member to come together, make their path, find real solutions on the ground, and resolve issues through collective effort. The C20 chair has said, in today's world, people experience two types of poverty: the poverty caused by lack of food, clothing, and shelter, and the poverty caused by lack of love and compassion. And what Amma says is, of these two, the second type needs to be considered and dealt with first. Because if we have compassion, then we will wholeheartedly serve those who lack food, clothing, and shelter. Next slide, please. The G20 members represent around 85% of the global GDP and about 2/3 of the world's population. While the G20 discussions happen at the ministerial level, the Civil 20, which is our official engagement group under the G20, engages with CSOs and NGOs of not only India, not only the G20 countries, but we have also been working with many of the African countries, many of the underdeveloped and developing economies. So we started our background work with a comprehensive review of what previous C20 countries have written as policy documents. We looked at the UN, we looked at the UNESCO, UNICEF, OECD, and also country policies. And after that, we had a huge number of deliberations, both virtual and physical events such as these. And we had a really overwhelming response that you see there. Nearly 16,000 participants, of which 5,800, which is nearly 1/3, were international participants from 106 countries. They engaged in policy dialogues, both virtual and physical, events, panel discussions, outreach activities, or provided inputs through surveys. We also participated actively in the G20 Education Working Group and the G20 Digital Economy Working Groups. Next slide. Based on our research and deliberations, we propose the following sub-themes, which are important and also interlinked. In education, education for life and global citizenship. Today's event is all about this. Then we have education for persons with disabilities. So there we are looking at education, communication, overcoming stigma, etc., providing low-cost assistive technologies for persons with disabilities to bring them to the front. Learning equity and emerging technologies. So learning equity, we are looking at reaching the bottom of the pyramid. It also means involving women, girls, marginalized populations, tribal, indigenous people. And we want to make sure that when we have emerging technologies, it reaches them. The last mile access is also important in this particular sub-theme. And we have skill development. So we are looking at future of skills. We are looking at how do you take skills that are where the training is in one country, but it's accepted in another country. So inter-country movement is possible. And we look at education in emergencies. So this came up after several meetings. This was not initially there because we didn't find it that much of a problem in India, but we're finding in Uganda and many other countries, Greece, there are a lot of refugees, and there are refugees
camps where people live for years. 17 years is the average. We won't believe it. And so what do you do for them in terms of education? And finally, digital transformation and accessibility. So that covers actually the SDGs. It's not confined to only education. And so providing digital technology for societal impact and also digital accessibility. So that when you provide these, we are not increasing the inequity. Global citizenship education, our very first theme, which we'll dwell upon a little more, has been discussed in previous Civil 20 and G20 policies. But our aim is to elevate it by incorporating education for life. This approach emphasizes action-oriented programs which are rooted in indigenous knowledge systems, ancient cultures, service activities, and mind management, or what we call meditation. Its primary objective is to cultivate compassionate individuals who actively promote inclusion, accessibility, and equity. It also advocates for inclusive, human-centered digital design and a value principle action approach to guide digital technology. By prioritizing these themes, we establish a strong foundation for successful implementation of all the other sub-themes. That is why this first sub-theme is so important, because it is our foundation. Education for Life seeks to create a meaningful education system going beyond materialistic success. It teaches students to embrace values, empathy, acceptance, understanding, a lot of things that Oro University is already doing. Instilling spiritual values, compassion, mindfulness activities, promoting inclusiveness, acceptance, sensitizing the community, respect for nature, respect for animals, balancing technology use. It's very useful, but then the discrimination that we heard Amma speak about, emotional resilience, building emotional resilience among children, integrating cultural diversity. I think some of the programs, the side event that Ayudh has is a core example of that. All over the world, they work with not one culture, promoting one culture, but actually working with intercultural themes. Next slide, please. So I wanted to also share an udaharan. What we've been doing is collecting best practices from around the world. So this is one practice, this is one real example from the US. It's Words Uncaged. It's a formal education program for people sentenced to life in California prison. It's founded by Dr. Bidhan Roy. What he does is empower people currently and formally incarcerated, and he does this through art, education, and community engagement while they are in the prison. Many times, these people have committed even murder. As teenagers, they've been into drugs. Sometimes they don't know what they're getting into. And they themselves often have been the victims of violence, such as racism or poverty. And many of them were excluded from mainstream education. And they got into drugs and such groups. And now what has happened is many of these beneficiaries are out of prison and also employed. So these, remember, are people that were sentenced for life. So we found this as a very good example of education for life, where the faculty and students that are contributing to this are also learning, and the prisoners themselves who have been victims in the past but also have committed crime are also being changed to be useful to society.
And along with that, I wanted to share a similar experience, similar projects from Embracing the World, which is Amma's global network of charitable activities. So there's a similar project called Circle of Love in the North America. And it's a program where volunteers become pen pals to prisoners, creating hope and peace in prisons. We also, in Kerala, Amrita Mutt has trained all the prisons, every single prison, in yoga and meditation. The number of prisoners has actually reduced. The number of women prisoners also has reduced, and skill development was also given. In fact, there was somebody in the prison system that won an award for this work. So normally what I'm trying to say is the cyclic nature of trauma, even this we can overcome with compassionate education for life. And finally, next slide. Once again, I want to thank Oro University for organizing this. I also want to thank Swami Amrita Swarupanandapuri. He is Amma's main and first disciple. He could not be with us. He is the Amma's representative for C20. He is also the Troika member of C20. And he sent a message this morning, which I want to share with you. He said he prayed for Amma's grace and guidance to be with us throughout this conference. Thank you. Many thanks to you, Dr. Prema, for your simple and effective message. It was so good to hear about Amritaji's observation that the lack of love and compassion is also a disease. Thank you for the udaharans you shared, the message of inclusion, which we can practice in daily life. We now go forward to the next part of our schedule. Previously in the schedule, we had Dr. Jayanti Ravi and a video address by her. For some reasons, we will not be able to have that now. So we move on to the chief guest address. So it is our privilege to have with us Professor Kapil Kapoor, the chief guest for today's event. Professor Kapil Kapoor is the chief advisor of Professor A.K. Singh Oro Chair for Indic Studies. He's also been the Pro-Vice Chancellor of JNU, the former Professor of English for the Center of Linguistics and English. He's also been Professor for the Special Center for Sanskrit Studies from JNU. He has guided 42 PhDs, 30 MPhils. He's been Dean of the School of Language, Literature and Culture Studies in JNU, the Editor-in-Chief of Encyclopedia of Hinduism, and he's worked on other projects of UNESCO. He's been a visiting professor at institutions outside. He's been a member of the Advisory Board for India Studies in foreign universities, member of the governing body of the Indian Institute of Advanced Studies in Shimla, the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad, and many, many more. When you meet and interact with Dr. Kapil Kapoor, as we did yesterday, the one thing that will impress you is that he adores and respects and enjoys the affection of his students more than anything else. So he has 63 years of teaching experience. I don't think any of us here would come close to that. So we are so happy and privileged, sir, and we welcome you very specially to come to the stage. Padma Bhushan awardee. It's a wonderful occasion, and
I express my deep sense of gratitude to Ramaji, to Mathurji, to Honorable Vice Chancellor Parimalji, and my friend Registrar Sahib Amrishji, and of course Kiranji. It's difficult to, I can call her my daughter, I can call her my younger sister, and great amount of love that I have received in this institution from all the people is something that I cherish, and gives me a feeling that in life it is possible to get more than what you deserve. The subject today, the theme that C20, Civil 20, and I think at one time I used to interact with Premaji some 20, 30 years ago, if I remember correctly. And the Civil 20 and the notion of education for life and education for the global context. I think I have lived too long to stay abreast of all the changes that have taken place in our modes of communication, in the way we relate to each other, and particularly in how gradually the machine has taken over more and more of our life's space. As I'm 83, so I think I have tried hard to keep pace with technology, and I've managed fairly well. But my reservation about technology remains, you see, and for some reasons. I've been asked to talk about ancient, our Gurukul system of education in the context of this theme. थोड़ी अंग्रेजी बोलनी चाहिए to prove that one is a professor of English. उसके बाद अपनी भाषा में आना ज़रा कंफर्टेबल है, एंड भाव बोध अपनी भाषा में ज़्यादा होता है. मैं कुछ ऐसी बातें कहूँगा, उनको सीरियसली मत लीजिए. इन एनी केस मुझे बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं. मुझे ये लगता है कि हम एक बड़ी तेजी से बदलती हुई दुनिया में रह रहे हैं और थे पिछले कोई 20-30 साल से. You know, 286 was the first computer, 286. Some of you will remember. And it was way back in 80s. और फिर कितने 295 और फिर बढ़ते क्या क्या उसके इसमें इतने राम हैं, कितने राम हैं, हाँ? या रैम हैं कंप्यूटर में, और कितने पैरेलल प्रोसेसर हैं, और कितना तेज़ चलता है, कितना फास्ट है. ये भी वैल्यूज़ ही हैं ना, कितना तेज़ चलता है, कितना कुछ एकदम यहाँ वो अपने पास रखता है. अपनी बुद्धि नहीं है उसके पास, अपनी बुद्धि नहीं है. But it has gradually taken over, technology has taken over more and more the power of our limbs, including the mind. तो जब लिम्स को ज़्यादा पावरफुल करना है, माइंड को ज़्यादा पावरफुल करना है, तो वी गो टू टेक्नोलॉजी.
Although mind powerful होता है कि नहीं, it's very doubtful. पर limbs, yes. I can't lift 100 kg, तो एक फोर्क लिफ्ट बना ली, 100 kg उठा लिया. मुझे इतना ही दिखता है, ऐनक लगा ली. और मुझे आकाश में इतनी गहराई तक नहीं दिखता, तो टेलीस्कोप बना ली. और मुझे बहुत बारीक चीज़ नहीं दिखती, तो मैंने माइक्रोस्कोप बना ली. ये सब हमने अपने ये जो इंद्रियां हैं उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. और क्योंकि एक प्रकार का मैजिक है ये कि आप उसमें से जब देखते हो तो आपको वो दूर दूर की गैलेक्सीज नज़र आती हैं, और वो देखने से आपको क्या होता है या क्या होगा वो अलग बात है, पर एक प्रकार का मैजिकल इफेक्ट है. सो द वर्ल्ड इज स्वेड बाय, द वर्ल्ड इज ओवरवेल्म्ड बाय इट्स ओन acquisition of knowledge, except perhaps some of the scientists who remain, for example, the man who invented urea apologized that I made a great mistake, you see. And there was another case, I am now forgetting, recent case, where in fact I don't know whether someday the person who has worked hard on artificial intelligence will also not apologize. Because ह्यूमन माइंड में 27 पैरेलल प्रोसेसर्स हैं, 27, दैट इज अगेंस्ट 5 पैरेलल प्रोसेसर्स सो फार इन द मशीन. और ह्यूमन माइंड हैज इन्फिनिट स्टोरेज कैपेसिटी, इन्फिनिट. परंतु जिस चीज़ का हम जितना इस्तेमाल करते हैं वो उसमें ही सीमित हो जाती है, क्योंकि हम अपने इसका दिमाग का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं. पहले हम याद रखते थे चीज़ें, इतनी सारी याद रखते थे. अब तो लोगों को गर्लफ्रेंड्स का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं होता. उसके लिए भी वो मोबाइल निकाल के देखते हैं. तो कितना एक, वेदर द ह्यूमन माइंड इज एम्पावर्ड और इट इज डिसएम्पावर्ड, ये एक सोचने की बात है. मैंने अभी बैठे बैठे कुछ 2-4 चीज़ें लिखी कि दुनिया बदली जो ट्रांसफॉर्म हो रही है पर्सनल से इम्पर्सनल की तरफ, पर्सनल से इम्पर्सनल. आगे हम जब चेस खेलते थे, 2 जने खेलते थे और 7 लोग बैठ के सलाह देते थे, फीला चलो, प्यादा आगे करो. देयर वॉज कम्यूनियन अमंग पीपल. अब हम कंप्यूटर में बैठ के मैं चेस खेलता हूँ, पर्सनल से इम्पर्सनल. What used to be personal interaction in so many spheres has become impersonal. एक पहला, इसकी बहुत ramifications हैं. I'll not go into the details. दूसरा, man to machine. We are in this transforming world. We are moving more and more away from man. टीचर को गुरु कहते थे, गुरु. और अब भी इन दिस चेंज्ड वर्ल्ड, अब भी एक अच्छा टीचर स्कूल में, क्लासरूम में एक चॉक और एक ब्लैक बोर्ड से, ही इज मोर पावरफुल देन एंड ऑल द कंप्यूटर्स दैट यू कैन यूज टू टीच. बिकॉज बच्चे सिर्फ किताब या विचार या शब्द नहीं सीखते, वो अपने टीचर को देखते हैं. वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, सोचता कैसे है, क्या बताता है, उसके जीवन मूल्य कैसे हैं. कई होते हैं ना टीचर, उनके बटन हमेशा गलत लगे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे. एंड सच पीपल आर पीपल हु डू नॉट केयर फॉर देयर अपीयरेंस.
अपीयरेंस। वो ये नहीं देखते कि भाई मेरे कपड़े कैसे हैं, वो किसी और एक अंतर ध्यान मुद्रा में रहने वाले वो टीचर होते हैं। हमने देखे, हमने अपनी लाइफ में देखे हैं, आज तक हम भूले नहीं अपने उन टीचर्स को। तो मैन से मशीन, टीचर बीच में बन गया फैसिलिटेटर। अब आजकल टीचर इज ए फैसिलिटेटर। वो तरह लगा दिया और उसमें लैब में बैठ गए, लगा दिया और अपने भी कान बंद कर लिए, बच्चों के भी बंद कर दिए। एवरीबडी लिसनिंग टू हिमसेल्फ। ए ब्यूटिफुल एक्सरसाइज in repeating the errors that one makes. जो वो कर रहा है उसी को रिपीट करने में। This is personal to impersonal, it is man to machine, and it is also from, एक बहुत बड़ा चेंज हमारी संस्कृति में है। हमारे पुराना शब्द, पुरानी एक saying है पतंजलि के समय से, शब्दम न कुरु, शोर न मचाओ। और घरों में, हमारे घरों में बचपन में, हाँ, माता पिता बड़े कहते थे कम बोलो, कम बोलो, डोंट, बिकॉज जो प्राण वायु हम इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, वो प्राण वायु ही हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन देती है। और जितनी देर हम बोलते हैं, हमारा जो माइंड ब्रेन है उसको हम डिप्राइव करते हैं ऑक्सीजन से। तो जितना ज़्यादा बोलते हैं तो उसने कम बोला, कम बोलो, कम बोलो। पर आजकल की दुनिया नॉइजी हो गई है। इट्स ए नॉइजी वर्ल्ड। वी आर टीचिंग एवरीबडी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, to use words, to talk, even when you have nothing to say, isn't it? So the world has become a silently noisy world. ये जो इंटरनेट है आपका, पूरी जो स्पेस है, इसमें इतना नाद है, इतना शोर है कि कोई हिसाब नहीं। और प्रमोशन साउंड की बहुत होती है। अब मैं एक रूरल गर्ल्स यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ 2-4 लड़कियों हॉस्टल से कूद के जान दे दी। वो क्या होता था कि ये लगा लिया शाम को, सुबह से शाम तक, और वो दुख भरे गीत सुन सुन के, हैं, कोई आएगा आने वाला, एंड नोबडी टर्न्स अप, विच इज़ ए क्लासिक स्टोरी फ्रॉम महाभारत। Pingala, who waited on and on and on for the prince to come, but he did not come, and she became restless and she could not sleep, and she was disheveled and distraught, टूट गई, fragment हो गई। Then one day Pingala sleeps peacefully. फिर एक दिन वो बड़ी शांति से सो गई, उसको नींद आई। क्यों? She substituted non-desire for desire. उसने desire की जगह non-desire substitute कर दी। अब ये बातें हम लोगों ने अपने दादियों से, नानियों से, माँ बापों से सुनी। ये कोई मशीन नहीं बताएगी हमको, कोई मशीन नहीं बताएगी। What I am driving at is that we cannot reverse द प्रोसेस। जो लहर चल रही है उसको वापस हम नहीं ले जा सकते, पर कम से कम हमें समझना चाहिए कि वो लहर की प्रकृति क्या है और वो क्या हमारी संस्कृति से मिलती जुलती है कि उससे अलग है। मैं मानता हूँ कि जो आजकल हो रहा है, दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। हमारी मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन जो थी, जिसमें पूरे ज्ञान ग्रंथ हम लोग अपने दिमाग में स्टोर करते थे,
CD या DVD या वीडियो या उसमें नहीं करते थे. You see, the oral knowledge culture which we have inherited, you see, in which the creation of knowledge, the storage of knowledge, the transfer of knowledge, and the dissemination of knowledge is from man to man by word of mouth, from mind to mind, from mind to mind. So when we speak, we don't communicate, we establish a communion of the spirit. Only then our communication has succeeded. तो एक तो ये, then I am surprised कि इतनी बातें सूझ गई कि जो बदल रही हैं. मिनिमम से मैक्सिमम. The world is shifting from minimum to maximum. Recently, there was a very interesting news from Japan. Japan has officially decided on minimalist philosophy. That now onwards, the Japanese society will live on the minimalist principle. अपने को समझाना पड़ता है ना, अंग्रेजी शब्द तो पढ़ लिया, मिनिमलिस्ट क्या मतलब है इसका. तो मैं और मिसेस कपूर, हम 2 जने हैं घर में, दोनों ही 83 साल के हैं. खाना कम खाते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, और दिन में 6 बार चाय पीते हैं तो 12 कप लगते हैं, 12 कप. पर अगर आप हमारे घर में सारे बैग बक्से देखेंगे, किचन देखेंगे, तो आपको 40 कप मिलेंगे. 40. तो ये जो जितना चाहिए उससे ज़्यादा है ना रखना, ये भारत की संस्कृति नहीं थी. वो जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान. कंटेंटमेंट. आई हैव सीन, उस जो मैं आपको लड़कियों की यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, कि वो लड़कियाँ गांव का परिप्रेक्ष्य था उस यूनिवर्सिटी का. गांव में इन अ विलेज, and 4,000 girls staying in hostels. They come from villages. और वो simple लड़कियाँ, totally unself conscious, clear eyed, not like the city influenced. क्योंकि सिटी में लड़कियाँ डर के रहती हैं शहर में. यहाँ नहीं, गुजरात अच्छी स्टेट है, पर दिल्ली में तो आदमी को भी खतरा है रात को, है ना. तो लड़कियों का तो अलग बात है. तो लड़कियों का वो डर के रहना जो है वो, पर गांव में जब आप देखते हो, दे हैव ए फियरलेस, क्लियर आइड, अनसेल्फ कॉन्शियस लुक. तो उन लड़कियों को पढ़ाने वाले कौन है, पढ़ाने वाली टीचर कौन है? जो JNU से DU से पढ़ के जाते हैं लड़कियां, लेडीज. और वो क्या सिखाती हैं? तुम्हारे साथ बड़ा इनजस्टिस होता है, बहुत धक्का होता है लेडीज के साथ. और ये गांव वाले जो हैं, रूरल पीपल, हाँ, हमने इनको डेवलप करना है ना, डेवलप करना है. ये बड़े बैकवर्ड हैं, है ना, बैकवर्ड हैं. वो बैकवर्ड हैं क्योंकि गांव में अभी भी माँ बाप की सेवा होती है, बड़े बैकवर्ड हैं, है ना. और शहरों में 3 कमरे के फ्लैट में माँ बाप के लिए जगह नहीं होती, कुत्ता रखा जाता है. I have actually seen this in Delhi. कि कैसे लाएं, पेरेंट्स कहें जी गांव में हैं, तो अच्छा गांव में तो आपका भाई हो, नहीं हमारा भाई भी बाहर है, तो वो कैसे उनको, नहीं गांव में तो लोग बड़ी देखभाल करते हैं, तो आप उनको यहाँ क्यों नहीं ले आते? अरे देखिए हमारा ये 2.5-3 कमरे का फ्लैट है, एक में तो कुत्ता है, हैं, और कैसे उनको लाके, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा. डॉग बिस्किट्स आ जाते हैं, यू नो. You get the point. This is development, ना. double-edged. जो moral values जो माता जी अमृतामयी जी की बात कर रही हैं, वो तो सारी they are going out. Because from minimal to maximum. ये जो philosophical change है, अब जापान has decided on minimalist philosophy. तो हमारे यहाँ क्या था, ये individually, not only in individuals, इवन सोसाइटी, समाज में. पंजाब में
किसानों ने, मेरे ज़माने में भी पंजाब का किसान, बड़ी फर्टाइल लैंड है, 3 क्रॉप्स होती थी, तीन क्रॉप्स होती थी। पहले एक जो कनक वीट हो गई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसमें चरी कहते हैं, जो जानवरों को खिलाई जाती थी, जिसमें नाइट्रोजन बहुत होती है, वो लगाई जाती थी। उससे जानवर खाते और नाइट्रोजन से उससे धरती को नरिशमेंट मिलती थी, नरिशमेंट मिलती थी। उसके बाद फिर तीसरी क्रॉप। आज पंजाब के किसानों ने यूरिया की मदद से 5-5 क्रॉप्स लेते हैं, 5-5, और इतना केमिकल वो डाला, इतना डाला कि देयर इज ए ट्रेन which runs from Gurdaspur to Chandigarh. It is called the Cancer Express. The Cancer Express. पंजाब का पानी 2 फुट पे होता था. You just dig for 3 feet. 5 नदियां वहां, and you get water. Now the water has gone down to 200 feet. क्योंकि पंप्स लगा के आपने 5 बार मैक्सिमल. Not just what you need, not just what you need, but maximum that you can have. Maximum that you can have. So it has happened in agriculture. The land has been poisoned, water has been poisoned, and it has happened in many other things also. In हमारी जो संस्कृति जो है नियम, संयम और श्रद्धा की, नियम वाली, हाँ, एक नियम होता है, एक बोलने का तरीका होता है, एक चलने का तरीका होता है, एक संयम होता है। 3 रोटी की भूख है तो 2 खाइए, संयम होता है। और रेवरेंस, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, फॉर द एल्डरली, फॉर वन हु हैज नॉलेज, फॉर वन हु इज ए मैन ऑफ धर्म, एंड ऑल्सो फॉर द ऑब्जेक्ट्स। हमारे ज़माने में हमने देखा कि वो मिक्सी लाते थे, खराब हो जाती थी, तो बाजार में जाके उसको ठीक कराते थे। वी वर ए रिपेयरिंग कल्चर, वी हैव बिकम ए रिप्लेसमेंट कल्चर, रिपेयरिंग की बजाय। अब क्या होता है, लेके जाते हैं, कितने पैसे लगेंगे, 500, नहीं कितने की है, 700 की, फेंक इसको। सो यू थ्रो अवे, डिस्पोज ऑफ, इंस्टेड ऑफ रेवरेंस you dispose of not only objects, even relationships. There is a time when the elder brother, if the younger brother gets annoyed with you, the elder brother will go to him and say, क्यों भाई, क्या गलती हो गई हमसे, हैं, क्यों नाराज हो गया है। आजकल कोई, अरे होता तो होने दो, वो अपनी कमाई खाता है, हम अपनी खाते हैं, you see. तो we have stopped repairing either objects or culture or relationships. तो ये सब चेंजेस हुए मिनिमल टू मैक्सिमम में। अब बाबा नानक तो बेचारे कह गए कि बांट के खाओ, पर बांट के खाना तो बड़ा मुश्किल है, बांट के खाना बड़ा मुश्किल है। वंस ए ईयर छबील लगा के पानी बांट देना, बढ़िया, यो आत्मा आपकी ठीक हो गई, है ना। और आपने वंस ए ईयर कुछ एक सेरेमोनियसली कुछ कर दिया, वो भी ठीक हो गया। बट टू हैव द होल पूरा लिविंग प्रिंसिपल लाइफ का, दैट what you are going to eat, you will eat after making sure that no one around you is hungry. So that living principle, kind of principle, which used to be there, is to be there. Anyways, and then knowledge to data. We are moving from knowledge to data, information. And what we call knowledge today is not knowledge, it is data, information. And what is education? Education is now only data management. Data bank बनाओ, डेटा इसको रखो, परम्यूट करो, उसको इधर से उधर करो, उसको हम यूज करेंगे। So this way, so these are some of the changes. Now I think I will just, I'll say that if you look at our own system of education, जो गुरुकुल, by the way, how are you? Good to see you and all. Till 19th century, our traditional schools were very much alive, very much alive. Wood's Dispatch
of 1854. I think Hindole, I think, has virtually digested it. Wood's dispatch of 1854 says that in India, in Bengal province, there were 2,57,000 schools. 2,57,000, गुरुकुल्स या तोल कह लीजिए, पाठशाला कह लीजिए, थे. And the range of subjects that those they used to teach, that included, for example, rhinoplasty also, surgery में, replacement of किसी को चोट लग गई तो नया बनाना, पार्ट बनाना. विशाखापट्टनम का जो गुरुकुल था, it was known for this. And in the Kangra Gurukul, they used to teach steel making. But Wood's ka dispatch, it is parallel to Macaulay's. Macaulay, don't think that Macaulay was not aware कि भारत कितना great country है, यहाँ की education कितनी अच्छी है. He was, but he was a very wise, he was a very good administrator, and he loved his own country. And so he wanted to do for his country what his country needed. His country needed that India should be ruled. Indian people should be ruled properly. And to rule them, you have to make them forget what they are. And to make them forget what they are, you have to change their education. Education system ko badalna hai. So I am a great admirer of Macaulay. He loved his country. And he knew what to do. And he did it. If the English people had gone by Wood's dispatch, Wood's का dispatch, in the House of Commons debate हुआ था कि 97% literacy in India. Can you imagine? In 1832, there was 97% literacy in India. And then in 1835, there was English Education Act, the beginning of all this modernization. You see, English Education Act, it was a one-page document, one page, that हम ऐसे, because the goal of education, अब जब आप अभी इसकी बात कर रहे हैं तो अब गोल, what is the goal of education? Education किस लिए? उससे आप किस प्रकार के व्यक्ति बनाना चाहते हैं? सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं कि संतुष्ट व्यक्ति बनाना चाहते हैं? किस प्रकार का व्यक्ति आप बनाना चाहते हैं पढ़ाने से, शिक्षा देने से? तो उसमें उनका जो वुड्स का डिस्पैच था लिटरेसी का, ये 1835 में उन्होंने कहा हम इनको ऐसे पढ़ाएंगे कि ये ओपिनियंस, मॉरल्स, वैल्यूज और इंटेलेक्ट, इन चार चीज़ों में ये हमारी तरह होंगे. अंग्रेज सिर्फ दिखने में हिंदुस्तानी होंगे. वो कौन होंगे? दे आर कॉल्ड इंटरप्रेटर्स. इन दैट वन पेज डॉक्यूमेंट हम इंटरप्रेटर्स बनाएंगे. अब इंटरप्रेटर्स का हिंदी अनुवाद करेंगे, दो शब्द हैं, एक दलाल और दूसरा बिचौलिया, है ना. और आज भी हमारे जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बिटवीन द टॉप creamy layer of 10 class of people and 90% of Indians, हम लोग बिचौलिए हैं. Even today, we are. And I think this is a very disturbing fact. We can talk infinitely about, education, access, quality, but the basic facts remain unchanged. What did 1835 Act did? The most damaging thing was, हम ऐसे तो लोग बनाएंगे, पर बनाएंगे कैसे? तो second clause was, हम इनको अपनी भाषा में नहीं पढ़ाएंगे. You see, we will not teach them in their languages, medium. That day, your Indian languages were assassinated. And the Indian mind was made subservient, incapable. The Indian mind gradually became a translated mind and a translator's mind. और अनुवादक बन गया, अनुवाद करने वाला बन गया. सोचता किसी में है, बोलता किसी में है. You see, then
till today, in spite of NEP, जिसकी बहुत प्रशंसा होती है और उसमें काफ़ी लास्ट स्टेज में हम भी इन्वॉल्व थे, पर आप ध्यान से पढ़ो उसको। वहां लिखा है वेयर एवर पॉसिबल, आप ध्यान से सुनिएगा। न्यू, ओरिजिनली कंफ्यूजन था कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना। तो वेयर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन will be the mother tongue up to class 5, possibly going on to class 8। अब आप देखिए इसको ध्यान से। एंड वी आर सेइंग बहुत बड़ा चेंज हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 3 साल तो हो गए हैं बने, तो अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ। मैं भी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आप भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम अंग्रेजी से ही पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी से नहीं इम्पोर्टेड मशीनों से पढ़ा रहे हैं। तो नेटिवाइजेशन तो कुछ हुआ नहीं, होगा भी नहीं, बिकॉज द बेसिक प्रॉब्लम वी हैव बीन सो कैरिड अवे, वी हैव फॉरगॉटन what was our system, how did our। अब देखिए थोड़ा मैं आपको थोड़े आई विल लाइक टू, आई कांट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम आई सपोज, बट थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि देखिए हमारे यहाँ गुरुकुल से लेके ग्रेट यूनिवर्सिटीज़, महान विश्वविद्यालय, तक्षशिला एंड विक्रमशिला एंड वल्लभी एंड नालंदा एंड ऑल ओवर इंडिया एक कंटिन्यूम था। एंड हमने, भारत ने बिना मशीन के इतने ज्ञान ग्रंथों की रचना की है कि सारी दुनिया की भाषाओं के ज्ञान ग्रंथ एक तरफ और हमारी 4 भाषाओं के ज्ञान ग्रंथ उनसे ज़्यादा हैं सारी दुनिया से। 4 भाषाएं हमारी ज्ञान की भाषाएं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और ओल्ड तमिल। मैं आजकल अवेस्टा को भी, वो जो ज़ोरोस्ट्रियंस की लैंग्वेज है, पारसियों की, वो भी जोड़ता हूँ, क्योंकि जिस तरह देयर आर एक्साइल्ड पीपल देयर आर एक्साइल्ड लैंग्वेजेस। और क्योंकि अवेस्ता में ज़ेंड अवेस्ता वॉज कंपोज्ड एंड ज़ेंड अवेस्ता इज ए सिबलिंग टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद। और अगर आपने ऋग्वेद पढ़ना है, समझना है, तो आपको वो भी, पर उस पर आई हैड एडवोकेटेड इन माई लैंग्वेज, आई वाज चेयरिंग ए लैंग्वेज पॉलिसी when Smriti Irani ji was the minister, and I had recommended the establishment of an Western university. Well, by the time things came to do something, हमारे यहाँ तो होता है ना, मिनिस्टर बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है और पॉलिसी बदल जाती है, क्योंकि हर नया आदमी नया अकाल तख्त बनाता है ना। अपना अकाल तख्त तोड़ के पहला दूसरा अकाल तख्त बनाता है, तो चीज़ें ज़्यादा होती नहीं। तो देखिए एक कंटिन्यूम था। दूसरी बात देखिए इसमें जो व्हाट आई वांट, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, इट वाज गुरु सेंटर, टीचर सेंटर। अब छांदोग्य उपनिषद पढ़िए, आप कठोपनिषद पढ़िए, आप जितने आपको इतने नैरेटिव मिलेंगे कि जो गुरु जो है, गौतम ऋषि था छांदोग्य उपनिषद में, वो सत्यकाम उनके पास जाता है कि मैं आपका शिष्य बना। गौतम ऋषि मस्ट हैव बीन द मोस्ट वेल नोन टीचर ऑफ हिज टाइम। तो उन्होंने कहा मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, ज़रूर बताओ कौन से घर से हो, कौन पिता कौन है, कहाँ के हो, जस्ट एलिमेंट्री इंक्वायरी। ये नहीं कि भाई माता का नाम नहीं पूछा, पिता का नाम नहीं, माता का नाम क्यों नहीं पूछते। हमारे लोग कहते हैं ना, आजकल लड़कियों को भड़काया जाता है ना इंडिया में आजकल कई चीज़ों से। तो सत्यकाम को ही पूछा, तो उसने कहा जी मैं आपको बताऊंगा, माँ से पूछ के। ही गोज टू हिज मदर जबला एंड आस्क्ड हर कि आई वांट टू गो टू लर्न, एंड ही सेज कि आप मेरे पिता का नाम बताओ, कहाँ के हो। एंड यू नो व्हाट जबला द मदर, द ग्रेट मदर सेज, आई हैव सर्व्ड सो मेनी मैन इन माई लाइफ, सन आई कांट टेल यू हु इज योर फादर, बट आई जबला एम योर मदर।
Go and say this to your teacher. And Satyakam goes, says this to Gautam Rishi, and Gautam Rishi says, what a great truth teller your mother is. And you are even greater. You shall be my student from today. You know. अब देखिए हमारी ट्रेडिशन के बारे में कई इसमें सारी जो मिथ्स हैं वे कि माँ का नाम नहीं, हमारे यहाँ तो ग्रेट लोग जो हैं वो अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं. शिवाजी की माँ का नाम काफी लोग बता देंगे, पिता का नाम कम को याद है. गौतमी पुत्र सतकर्णी, हु वाज हिज फादर? कैन एनीबडी टेल? नो, बट ही वाज सन ऑफ गौतमी. तो मदर इस तरह ये ऐसी चीजें, एनीवेज ये लिटिल आउट ऑफ वे. सो देन यू नो दीज गुरुकुल सिस्टम्स, इसमें एक गुरु की टीचर सेंटरिंग, अ ग्रेट गैलेक्सी ऑफ टीचर्स वी हियर व्हेन वी रीड रामायण, वी रीड महाभारत. एंड संदीपनी जिन्होंने कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते थे उनके पास. द प्रिंस एंड द पॉपर, both were the students. You see, in the same way, Dronacharya and Drupad, the king's son, they were students of the same teacher. Same teacher. The access was equal. Today, 90% of the masses, people 80%, they can study up to a point. वो आपके IIT या IIM में नहीं जा सकते, एम्स में नहीं जा सकते, या पैसा नहीं है या अंग्रेजी नहीं आती. यू सी, इन IIT रुड़की 49 students were turned out after 1 year because they failed, and they were asked, because they were bright ones, they had taken the entrance test, cleared it. तो उनको पूछा गया अभी क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे और यहाँ हमको तो अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी की ही किताबें, तो अंग्रेजी में ही लिखना तो हमसे तो नहीं हुआ. एंड इफ यू आस्क एज वी डिड सम ऑफ द इन दोज डेज, अब तो एक द चेंजेस दैट आर, जो बदलाव आ रहा है एटीट्यूड्स में, वो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट या उससे नहीं आ रहा, वो इस देश की एक डायनामिक्स है. जैसे समुद्र की एक डायनामिक्स होती है ना, बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और लहर के ऊपर कोई लकड़ी का शतीर होता है, वो सोचता है कि देखो मेरी शक्ति, देखो मैंने कितनी बड़ी लहर खींच ली. तो सरकार भी वैसे ही है कि हम देखिए कितना बदलाव कर दिया हमने. वो नहीं करते, वो नीचे से आता है, प्रेशर फ्रॉम बिलो, एंड दैट इज द डायनामिक्स दैट इज मेकिंग द चेंजेस एंड नॉट एनी पॉलिसीज अदरवाइज. तो इसमें ग्रेट टीचर्स, मैंने गौतम का नाम लिया, संदीपनी का लिया. कृष्ण हिमसेल्फ इज अ ग्रेट टीचर. यू नो, इन दैट भगवद गीता, इन दैट डायलॉग, कृष्ण हिमसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट टीचर. एंड व्हाट ए टीचर, he answers 17 questions. अभी हमने सुना, कहा गया कि भाई हमारा जो एजुकेशन था उसमें बच्चों को सोचने की नहीं सिखाया जाता था, सब कुछ बताया जाता था. That's not true. That's not true. The method in the gurukuls used to be one of Chintan Manan and dialogue. Jigyasa was the first. Then the guru will give a mantra in the morning to Krishna and Sudama and others कि भैया अब जाओ गाय चराओ सारा दिन. Think about it and come back and tell me next day what you have understood and what you have not understood. So dialogic imagination is the characteristic Indian imagination. But you can't hold a dialogue with a machine. You need a living teacher. Nothing like a living teacher. मैंने कहा ना, गांव में एक अच्छा टीचर, एक चौक और एक ब्लैक बोर्ड के साथ, he can ring miracles. And in any case, ये elitist तो है ही. In spite of Lyotard's claim
that knowledge will be democratized by the computer. Not at all. In fact, the most democratic system of knowledge and education is the oral. उसमें आपको रीडिंग एबिलिटी भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सुनने की शक्ति चाहिए. और भगवान ने आंखों के ऊपर तो पर्दा दिया है, कान पर पर्दा नहीं दिया है. सुनने से आप ग्रहण करते हैं ज्ञान ओरल ट्रेडिशन में. एंड इट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक. दैट्स व्हाई इन इंडिया in old centuries, education was neither elitist nor for the elite. It was the most democratic kind of education. Where Gurukul mein, where a person who today you will call an illegitimate child, Satyakam, today's terminology, can have entrance because it's only oriented on merit. कितना truth telling. बिकॉज आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम किसी को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, किसी को भी नेचुरली आता है हमको झूठ बोलना, पर सच बोलना सिखाना पड़ता है. इट्स ए ग्रेट अटेनमेंट. सो दैट्स वाई द ट्रूथ टेलिंग ऑफ सत्यकाम अर्नड हिम द एलिजिबिलिटी. अधिकारी बन गया शिक्षा प्राप्त करने से सबसे बड़े टीचर से. और डायलॉग में महाभारत में एक वन पर्व है. ये these are mind you, because I am quoting from texts which were studied in the gurukuls. आज भी यहाँ गुरुकुल है, वहाँ ये पढ़े जाते हैं. कठोपनिषद पढ़ा जाता है. नचिकेता का जो डायलॉग है यम के साथ पढ़ा जाता है. छांदोग्य उपनिषद पढ़ा जाता है. नारद का वो जो उनका संवाद जो है उनके साथ सनत कुमारों के साथ कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है, तो वो संवाद पढ़े जाते हैं. और उन संवादों से दे बिकम लाइव. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ए डायलॉग? एडवांटेज इज व्हेन देयर इज ए डायलॉग, पीपल आर, इन फैक्ट इन इंडियन ग्रंथ देयर आर नॉट डायलॉग, दे आर मल्टी लॉजिक. देयर आर मोर देन 3 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स. तो आपके सामने एक ड्रामा हो रहा है आइडियाज का. एंड एज दे प्रोसीड, you also proceed, and you reach the conviction, you reach an understanding along with them, and you feel that you have discovered that truth for yourself in the dialogic mode, while in the monologic mode. And by the way, your machine is not dialogic. For all the claim, all you can do is permute and this and that, but it's not dialogic. You can't be dialogic with a machine, multilogic with a machine. कि आपने 4 कंप्यूटर लगा दिए, उसमें डेटा भर दिया और आप बीच में बैठ गए, तो कोई ये बोले, कोई ये बोले, कोई ये बोले. सो आई थिंक इन दी हाँ, मैं आपको वन पर्व का बता रहा था. आई थिंक किरण जी, ज़्यादा बोलता हूँ ना मैं, 2 मिनट बस खत्म करता हूँ. वन पर्व में युधिष्ठिर द्रौपदी का संवाद है. और बच्चे अगर बैठे यहाँ, बच्चे, तो उनको खासकर मैं कह रहा हूं कि जरूर पढ़िएगा. 2 चीजें महाभारत में जरूर पढ़िएगा. एक तो कौरव सभा, जब द्रौपदी सबसे कहती है, बड़े बूढ़ों से, कि भाई ये जो हुआ मेरे साथ, जो मुझे दांव पे लगाया जुए में मेरे पति ने, क्या ये धर्म है? और उसे कोई जवाब नहीं देता. धृतराष्ट्र जवाब नहीं देते, भीष्म पितामह जवाब नहीं देते, कृपाचार्य जवाब नहीं देते, कृतवर्मा जवाब नहीं देते, कोई नहीं जवाब देता. नोबडी. फाइनली कौन उठता है? द यंगेस्ट कौरव, कौरवों का सबसे छोटा भाई, वो उठता है. अब मैं इंसिपिएंट डिमेंशिया है तो मुझे नाम अभी उसका भूल रहा है. सबसे छोटा लड़का विकर्ण, हाँ, वो कहता है कि भाभी कुछ पूछ रही है, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप जवाब क्यों नहीं देते कि ये धर्म हुआ? क्या धर्म हुआ है? तो अगर आप नहीं देते तो मैं जवाब देता हूं, ये अधर्म है. उस पे कर्ण, जिसके ऊपर आजकल के मॉडर्न स्कॉलर्स बड़ी दया करते हैं कर्ण पर, कि उसे बहा दिया, वो इतना अच्छा आदमी था, है ना, और उसको उसका कवच मांग लिया.
Karna was highly selfish person. For his own, kingdom, getting a kingdom, he did everything. जो अपनी माँ की बात नहीं माना कि माँ ठीक है तुम्हारे 5 बेटे रहेंगे, मतलब एक को तो मैं जरूर मारूंगा, ही सेड. यू सी. तो कर्ण क्या कहता है उसको, विकर्ण को, कि तुम उस चील के बच्चे की तरह हो जो अपना ही घोंसला नोचता है. तुम होते कौन हो बोलने वाले? हम नहीं बोल रहे, तुम क्यों बोलते हो? तो एक तो ये कौरव सभा पढ़िएगा. तो चलते चलते द्रौपदी कहती है कि वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो, और वृद्ध नहीं जिसमें ज्ञान ना हो, और ज्ञान नहीं जिसमें धर्म ना हो. These are the last words of द्रौपदी. इनको सुन के गंधारी धृतराष्ट्र को कहती है ये सती नारी श्राप दे के जा रही है, नाश हो जाएगा. इसको वापस बुला के इसको, वो पूरी कहानी, वो 3 वर लो, वो 2 ही लेती है, तीसरा नहीं लेती है, कि क्षत्राणियाँ 2 से ज़्यादा वर नहीं लेती हैं, तो 2 लेके चली जाती है. एक तो फिर वन पर्व में द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद है. इसके साथ में किरण जी आई विल वॉक ऑफ. डिस्कशन क्या है, द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, रात का टाइम है, जब एग्जाइल में है, जंगल में बैठे हैं, और इतना बड़े पतीले में उसने चावल बनाए और कुछ तो था नहीं, दे वर इन एग्जाइल, और वो खा के 5 पांडव और बैठे हैं. तो द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर को कि तुम तो धर्मराज हो, है ना, धर्म का रास्ता अपनाया, और ये तुम्हारे भाई ये भी धर्मराज है. तुम उठ के चले कौरव सभा से, ये भी अपनी आंखें नीचे करके पीछे पीछे चले गए, जबकि इनमें एक में इतनी ताकत थी कि वो पूरी कौरव सभा को पलट देते, पर क्योंकि बड़ा भाई गया है तो वो भी पीछे चले गए. ये भी धर्मराज है, पर आपको धर्म के रास्ते पे मिला क्या? आपको धर्म से मिला क्या? ये देखो चावल खाए हैं, और उसको देखो दुर्योधन को मखमल के बिस्तर पे बैठा है, चांदी के बर्तनों में भोजन कर रहा है, हाँ? और वो कहता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं सब जानता हूं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैंने इनसे राज्य ले लिया है, अब मैं दूंगा नहीं, चाहे जान चली जाए. उसी कहते देखो उसको, वो तो अधर्म है का रास्ता, और तुम्हें क्या मिला धर्म के रास्ते से? तो युधिष्ठिर कहता है, इफ यू डिसएग्री विद योर वाइफ, यू हैव टू फर्स्ट प्रेज हर एंड देन डिसएग्री, सो तो वो युधिष्ठिर कहता है द्रौपदी को, ओ सुंदर नयनों वाली, दिस इज हिज, ताकि वो नाराज ना हो ज्यादा, कि तुम नास्तिकों की भाषा बोल रही हो, नास्तिकों की भाषा बोल रही हो. ये बड़ा ब्यूटीफुल है. पेज व्हाट ही सेज, मैंने धर्म का रास्ता ये सोचकर कभी नहीं अपनाया कि मुझे मिलेगा क्या. जो लोग धर्म का रास्ता ये सोच के अपनाते हैं कि उन्हें मिलेगा क्या, दे आर ट्रेडर्स इन वर्च्यू, वो धर्म के व्यापारी हैं. मैंने नहीं कभी बुलाया, मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है. मैं जानता हूं मैं ठीक हूं, मैं जानता हूं राज्य मेरा है, और मैं जानता हूं कि दुर्योधन ने गलत तरीके से ले लिया है, पर मैंने उसको क्षमा कर दिया. ये मैंने सीखा है. वो भी अभी उसके बाद भी कन्विंस नहीं होती. कहती है जब मोतियों की माला बिखरती है, या नदी के किनारे का पेड़ गिरता है नदी में, ये सब उसकी इच्छा से होता है. जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो भी उसी की इच्छा से हो रहा है. सो क्या मतलब है? इवन गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म. भगवान को भी कोई इंटरेस्ट नहीं. उसका वो बड़ा बढ़िया जवाब है. वो फिर अगली बार जब किरण जी बुलाएंगी कि हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर व्हाट हैपन्स टू अस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. We shall begin again. I welcome you all to the plenary session of C20 CONCLAVE, Education for Life and Global Citizenship. It gives me immense pleasure to welcome and introduce to you all our first distinguished guest, Dr. Hindol Sen Gupta.
Dr. Sengupta is a multiple award-winning historian and author of 10 books. He was trained in South Asian history and international relations at Worcester College, Oxford, as a Chevening scholar, and in business and finance as a Knight Baggot Fellow at Columbia University. He also has a doctorate in international relations from the Geneva School of Diplomacy and International Relations. He was also trained in filmmaking and journalism at Jamia Millia Islamia and Delhi University. Dr. Sengupta is a World Economic Forum Young Global Leader. He has been an Australia-India Youth Dialogue Fellow and was the co-founder of the Sweden South Asia Media Dialogue. He has been editor-at-large for Fortune magazine and a senior journalist at CNBC TV 18, Bloomberg TV India, and CNN IBN. We welcome you to Oro University, sir, and I would invite you on the dais to share your invaluable insights on educating citizens about the heritage and ancient cultures of India. Please, sir. I would also request Dr. Monica Suri, Associate Dean Academics, Oro University, to felicitate sir. Thank you very much. I always enjoy coming to Gujarat, a state that I've been coming to for many, many years now, maybe 15 years. Not least because I find, whether it's Ahmedabad or it's Surat or it's Vadodara, I find the whole mood here more relaxed than in Delhi and Mumbai, where I usually, spend a lot of my time, or in Bangalore, where one is stuck in terrible traffic. And also your dhoklas are quite good. I like them too. And your amras. I can go on and on. Thank you, ladies and gentlemen. I'm also really delighted to be here because Oro University is founded in the name of perhaps one of India's greatest sons, Sri Aurobindo. It is very tragic and sad that most people in India don't really understand what Aurobindo tried to say. That's actually partly their fault and partly Aurobindo's fault, in my humble opinion, because Aurobindo wrote some of the most dense, some of the most intelligent, some of the most in-depth tracts about Indian philosophy that has ever been written, And it's really not easy, even for people who have spent many, many years studying philosophy and reading Indian texts. It is not easy to understand Aurobindo. That's why a lot of people find it easier to access the philosophies of Sri Aurobindo through the mother. Because the mother, in a sense, like her name, is more accommodating, more accessible, more, in a sense, loving and caring and nurturing towards anybody who comes to seek that principle. But I think the Aurobindo and the mother are very important to remember when we discuss the idea of citizenship. I was recently at this wonderful 2-day conclave where people were talking a lot about Vyakti Nirman. It was something that had been organized by a section of the RSS. And they were talking a lot about Vyakti Nirman. And I asked them, well, it's all very well to say Vyakti Nirman, but where are these Vyaktis? Where are they? Do we know them? Do we know what work they are doing? And to that, somebody gave me a very profound answer. They said, well, actually one of the best things for such Vyaktis, such people to do is to give selfless service which is anonymous. आप ऐसे दीजिए राष्ट्र को कि आप दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता ना चले. ये हम हमेशा चैरिटी के बारे में कहते हैं, पर उन्होंने मुझसे कहा कि राष्ट्र को भी जब आप दें तो ऐसा दें कि दाएं हाथ से दे बाएं हाथ से पता ना चले. This is very important because the moment the person said this to me, I remembered Sri Aurobindo. Because anybody who knows Sri Aurobindo knows that he began life in a very different way. Sri Aurobindo was taught, Kapil Kapoor ji was telling us about the ultimate Englishman. Sri Aurobindo was taught and brought up to be the greatest Englishman among the English. He had a classic English education. He was taught European languages. He was taught to dress like the West, eat like the West, speak like the West. He was taught their philosophies. But like many others, Aurobindo then proceeded to turn all that knowledge
and turn inwards towards his own country. He turned, I studied in England too, and the British really hate us. Many of the upper caste, aristocratic British even hate us even today. They really hate us. I'll tell you why they hate us. उनको ये खराब लगता है कि आप लोगों में जो सरदार थे, the people who were your leaders, they all came and learned our secrets in our country, went back and used it against us. और आप तो गुजरात में हैं, वहां पे तो प्रसिद्ध है. आप गांधी जी को देख लीजिए, सरदार पटेल को देख लीजिए, whose biographer I am fortunate to be. Each of those people went to the West, understood the West, and turned those lessons against the West to bring us freedom. This is a very important lesson of citizenship. Citizenship is about where your fundamental bearings are. आपकी नींव कहां पे है? आप यहां से सीखिए, वहां से सीखिए, वहां से सीखिए, कहीं से भी सीखिए. But you must always return back to your नींव, your fundamental core. I often tell my younger, audiences कि देखिए, when you have done everything, अभी मैं हाल ही में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में एक बुक टूर में गया था, तो I was studying about a lot of younger people कि जिंदगी में एक समय आता है, और ये मुझे भी पता नहीं था, 10-20 साल पहले मुझे भी ये पता नहीं था, पर ये आपको समझ में आता है थोड़ी थोड़ी. जब आपने सब कुछ खरीद लिया और आपने सब देख लिया और आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद जो रह जाता है, दैट इज योर रियल सेल्फ. योर एक्चुअल सेल्फ बिगिंस फ्रॉम देयर. वो मैंपन का जो मैं होता है, वो मैं वहां से शुरू होता है. वी हैव बीन टॉट इन आवर ग्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज, नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस. When you take away this and you take away this and you take away this, and what remains behind is your true self, right? तो आप सब कुछ कर लीजिए, आप डायमंड्स खरीद लीजिए, फेरारी खरीद लीजिए, ऑक्सफोर्ड में पढ़ लीजिए, हार्वर्ड में पढ़ लीजिए, सब देश देख लीजिए, हर जगह पार्टी कर लीजिए, हर गाड़ी खरीद लीजिए, उसके बाद जो रह जाएगा, that is your inner self. And when you come to that point, when you realize मैंने हाल ही में एक किताब लिखा शीला प्रभुपाद जी के बारे में, जिन्होंने इस्कॉन का शुरुआत किया था. जॉर्ज हैरिसन बीटल्स के जब आए थे शीला प्रभुपाद के पास, वो कह रहे थे कि देखिए, हम तो 4 लड़के थे, हमारे देश में हम कहेंगे गांव के लड़के थे, स्मॉल टाउन इंग्लैंड से थे. हमने कभी सोचा नहीं था कि ये होगा हमारी जिंदगी के साथ. वी विल बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल म्यूजिकल बैंड एवर. ऐसा शोहरत, ऐसा दौलत, ऐसा फेम जो कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता. उसके बाद उन्होंने कहा, वो सब मिल जाने के बाद एक दिन हमें लगा, पर हम तो फिर भी खुश नहीं हैं. हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास दौलत भी है, शोहरत भी है, फेम भी है, जहां हम जाते हैं हजारों तादाद में लोग हमें चेस करते हैं, पर हम फिर भी खुश नहीं हैं. क्यों खुश नहीं हैं हम? When they began to ask that question, that's when their real self began to come out. And that real self, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि if India has to teach anything anybody, अगर विश्व में, ये हम कहते हैं विश्व गुरु, तो विश्व गुरु सिखाएगा क्या? चलो विश्व गुरु तो हम बन गए, पर हम सिखाएंगे क्या? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि there is only one thing that India can teach, which is its spirituality. Its inner self. If India is not able to teach that, बाकी तो क्या ही हम सिखाएंगे? अगर वो हम नहीं सिखा पाए. ये जो इतनी सारे मैं कहानियां बातें बोल रहा हूं, इसका ताल्लुक सिटीजनशिप से क्या है? तो मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूं. ये सिटीजनशिप का, पाश्चात्य का जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री विल के ऊपर आधारित है, कि मैं एक फ्री इंडिविजुअल हूं, आई हैव फ्री विल, है ना. मेरा एक अपना, मेरे अंदर की जो एक इंडिविजुअलिटी है, उसके ऊपर मेरा एक फ्री विल है. आई डिटर्मिन थिंग्स. चलो, वहां से हमने शुरू किया और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं
कि फ्री विल तो छोड़िए, हमारा शॉपिंग लिस्ट भी अमेजॉन तय करता है। क्योंकि आप देखिए, आप जब amazon.in पे जाते हैं, हाउ मच फ्री विल डू यू रियली हैव? द एल्गोरिदम डिटर्मिन्स एवरीथिंग. The algorithm determines every behavioral move. The algorithm thinks what you think. मैं बंगाल से हूं, एक तो मैं कहा जाता था, जो बंगाल आज सोचता है भारत कल सोचेगा। आप जो कल सोचोगे, आज एल्गोरिदम आपके लिए सोच रहा है। यह मजेदार बात है। So your free will, you will realize, and especially for the young people, as artificial intelligence comes in, your free will be demolished. आप हर जगह जाएंगे, क्या फ्री विल है? हम फोन तो कभी रख नहीं पाते, काहे का फ्री विल है ना? तो एडिक्शन इस लेवल पे है हमारा, और कंट्रोल टेक्नोलॉजी के हमारे पूरे जहन में इतना घुस चुका है कि फ्री विल कुछ नहीं है। आपके सारे चॉइसेस डिटरमिन करता है ये एल्गोरिदम। युवल नोआ हरारी बोल के एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा चलो ये सब होने के बाद तो फिर आदमी का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द इंडिविजुअल, द सिटीजन? ऐसे राष्ट्र में जहां पे पूरा एल्गोरिदम डिटरमिन सब कुछ है, सिटीजन का क्या होगा, इंडिविजुअल का क्या होगा? उनका आंसर था, द इंडिविजुअल विल हैव टू गो इनवर्ड्स and know thyself, know yourself. जब वो मैंने know yourself पढ़ा, of course I only obviously thought about the Upanishads, because if there is one lesson that the Upanishads teach us, it is that there is nothing else to know but to know yourself. मेरे एक गुरु होते थे, वो कहते थे कि हिंदू फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में सिर्फ 3 सवालों का उत्तर हम खोजते रहते हैं। मैं कौन हूं, who am I? मैं क्या चाहता हूं, what do I want? और मेरा लक्ष्य क्या है, what is my purpose? मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, और मेरा लक्ष्य क्या है? वो कहते थे कि आप देखिए, जितने हम नॉर्मल लोग जितने भी हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 पे अटक जाते हैं, उससे आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। और हर आपकी जिंदगी के हर पड़ाव में ये उत्तर जो है वो अलग है। आप सोचिए, आप जब 20 साल के थे या 15 साल के थे, आप अगर सोचते मैं कौन हूं, उसका जवाब और आज का जवाब में अंतर है। आप जब 40 साल के थे और कोई अगर 80 साल का है या 60 साल का है, उसके जवाब में अंतर है, मैं कौन हूं। Who am I changes from time to time, right? एक बहुत ही there's this wonderful Kabir, song, it has been sung, it's a doha of Kabir that says 4 तरह के राम होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा हर घर कर बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा सबसे न्यारा। तो बंगाल में किसी ने कहा कि हम तो सिर्फ लेवल 1 के राम में रुक गए। उस लेवल 1 के राम के, तो सिटीजनशिप का भी यही मेरा आपसे कहना है। हम जैसे सिटीजनशिप को समझते हैं, बिकॉज यूर ओरो यूनिवर्सिटी एंड यू आर ब्लेस्ड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री औरोबिंदो हिमसेल्फ, यू मस्ट अंडरस्टैंड सिटीजनशिप फॉर यू कैन नॉट रिमेन एट दैट लेवल 1, वरना वो लेवल 1 के राम में अटकने वाली बात हो जाएगी। आप वो दशरथ के बेटे लेवल पे ही अटक जाओगे, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाओगे। So you must enable your students and yourself to rise above the base level of human existence and ask the deeper questions, because education is about these deeper questions. Otherwise, life is, people realize as life goes by, it is profoundly short. The one thing that you can say about life is that it's really short. And before you know it, it's over. So you must encourage, and we must encourage as citizens of this country to help people become a better citizen by asking the right questions to themselves. प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हम डिजिटल इंडिया कहते हैं। डिजिटल इंडिया का एक डिजिटल सिटीजनशिप भी है और एक डिजिटल सिटीजन भी है। मैंने अभी एक हाल ही में पेपर लिखा है, बट देयर इज नॉट इनफ
work on this being done. ये डिजिटल सिटीजन क्या है और किस मायने में ये डिजिटल सिटीजन पहले का जो सिटीजन होता था उससे कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट होगा? मेरे अंदाजे में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में, पहले हमारे पास कम फ्री विल था, अब एकदम एब्सेंट फ्री विल हो जाएगा. Because we will be governed by algorithms at every level in everything that I do. And if you want to retain a sense of individuality, of being human, you must look inwards and retain that identity, which can only come if you spend time looking inwards. देखिए, हम जब छोटे थे, मैं ये हर जगह कहता हूं, हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर जगह पर हमारे देश में स्पेशली एक इनर लाइफ होता था लोगों में. सोमवार को उठे, माता जी शंख बजा रही हैं, घर पे मंगलवार को कुछ पूजा हो गया, ऑफिस जाने के पहले पिताजी थोड़ा मंदिर होके गए, बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को एक दिन हो, कोई माता जी का थोड़ा उपवास होता था. देयर वाज अ सेंस ऑफ इनर लाइफ. Like, I'm from Bengal. My entire idea of home is the smell of agarbatti. Because हमारे घर में हमेशा सवेरे भी मम्मी पूजा करती थी, शंख बजाया जाता था, अगरबत्ती होता था, शाम को भी होता था. There was an inner life. कुछ तो होता था. We are the first generation. मेरा जनरेशन पहला जनरेशन इंडिया में है जिसका कोई इनर लाइफ नहीं है. वो पूरा टूट गया है. कुछ लोगों में होगा, पर वो इनर लाइफ का पूरा टूट गया है. मंदिर की जगह नेटफ्लिक्स आ गया है. पर नेटफ्लिक्स में एक्चुअली आई कीप टेलिंग पीपल, नेटफ्लिक्स में इफ यू वांट टू सी वॉच नेटफ्लिक्स, आई विल टेल यू व्हाट टू सी ऑन नेटफ्लिक्स. वहां भी कुछ अच्छी चीज आप देख सकते हैं. पर बोलने का तात्पर्य यह है कि दिस इनर लाइफ जो एक इंसान के अंदर होता है, कि कभी तो मैं मटीरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस से थोड़ा हट के कुछ तो सोचूं, कभी सोचूं, कुछ तो सोचूं. ये जो एक इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो खत्म हो चुका है. तो आपके मॉरल वैल्यूज आएंगे कहां से? ये सोशल मीडिया पे लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं धर्म धर्म करके, तो ये धर्म आएगा कहां से? कौन सिखाएगा आपको? कहां से आएगा? आप 5 मिनट शांति से मोबाइल रख के बैठ नहीं सकते, कहां से आएगा? वैष्णविज्म में कहा जाता है कि कलयुग में भगवान श्री राम मंत्र के रूप में आते हैं. इसीलिए हम, और आप तो गुजरात में है, जय श्री कृष्ण आपका गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है, तो आपको तो ये समझ में आता ही है कि मंत्र जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं, श्री कृष्ण उस मंत्र में उनका बंगाली में हम आविर्भाव कहते हैं. ही अपीयर्स, द लॉर्ड अपीयर्स इन दैट मंत्र. राइट? कलयुग में ये मंत्र, श्री चैतन्य ने कहा था कि कलयुग में मंत्र के हिसाब से श्री कृष्ण आएंगे. पर मंत्र का टाइम कहां है किसके पास? इफ यू डोंट गिव योर सेल्फ दैट टाइम टू सेल्फ रिस्पेक्ट, how will you become a concerned citizen? You cannot become a concerned citizen is not only about pointing out how many potholes are there in the streets और बिजली कितनी बार आई या गई. ये मापदंड एक सिटीजनशिप का नहीं है. ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहता गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको सच में एक एनलाइटन राष्ट्र क्रिएट करना है, तो वो एनलाइटन राष्ट्र कहां से आएगा विदाउट एनलाइटन ह्यूमन बीइंग्स? अगर उनके लोग ही एनलाइटन नहीं है तो कहां से राष्ट्र आएगा? और हमारे यहां पे ना हमेशा होता है कोई और करेगा, कोई और करेगा हमेशा. दैट्स वी लव टू आउटसोर्स. दैट इज, इसलिए आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में हम बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्चुअली आउटसोर्सिंग बहुत है. कोई और करेगा. 2012-13 में जब मैं लोगों से बात करता था, हमेशा लोग कहते थे कोई कुछ करता क्यों नहीं है. आज भी कहते हैं कोई कुछ करता क्यों नहीं है. चलो, तो मैंने एक दिन पूछा एक रादर लार्ज गैदरिंग से, आज बात बताइए, ये कोई है कौन? हु इज दिस कोई? है ना, कोई कौन है?
बराक ओबामा मैंने कहा था फेमसली जब वो प्रेसिडेंट बने थे, वी आर द वंस वी हैव बीन वेटिंग फॉर। हम जिनका इंतजार कर रहे थे वो लोग हम ही हैं। वी आर द वंस वी हैव बीन वेटिंग फॉर, राइट? एंड आई थिंक दैट्स सच अ वंडरफुल थिंग कि जिन लोगों का हमें इंतजार है कि कोई आके बचाएगा, वो हम ही है। वी आर द वंस वी हैव बीन वेटिंग फॉर। एंड आई थिंक this can only happen with enlightened citizenship. It cannot happen with a non-enlightened citizenship. तो ये enlightened citizenship का जो निर्माण है, ये आप जैसे institutions, universities से, schools, colleges से निकलेगा. But in order to have enlightened students, you must have enlightened teachers. Because if your teachers are not enlightened, then your students cannot be enlightened. It is not possible. You must have enlightened teachers. आप देखिए एक संस्कृति क्या है। हमारे देश में हमेशा कहते हैं कि हमारी संस्कृति है। क्या है ये संस्कृति? है ना? संस्कृति ये है, और एक शिक्षा का जो आपका इंस्टीट्यूशन होता है, माँ बाप ने आपको जो सिखाया है, आपके टीचर्स ने जो सिखाया है, ये होता है संस्कृति। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं प्रोफेसर कपिल कपूर से कभी नहीं पढ़ा, मैं उनका स्टूडेंट कभी नहीं था। मैंने सिर्फ उनको सुना है और उनकी किताबें पढ़ा है, पर जब भी मैं मिलता हूं उनका मैं पैर छूता हूं। ये संस्कृति मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है। That if you learn anything from anybody, genuinely learn, वो आपका गुरु है। मैं उनको गुरु मानता हूं। उन्होंने कभी मेरा कोई पेपर मार्क नहीं किया, पर मैं उनको मेरा गुरु मानता हूं। Because I have genuinely learned from the man. I have genuinely understood principles of what we are from the person. So in conclusion, ladies and gentlemen, I want to leave you with the thought that our country has everything. आप देखिए श्री अरबिंदो की जिंदगी से हमें पता चलता है कि सब कुछ है हमारे देश में। कोई विदेश में विदेशी बनने के लिए जाता है, वो आके रेवोल्यूशनरी बन जाता है। बंगाल के अग्नि युग, आप में से कहीं को द एज ऑफ फायर जिसको हम कहते हैं बंगाल में, अग्नि युग का एक मेन लीडर बन जाता है। उसके बाद जब वो उनको लगता है कि ये बंगाल में काफी कहा जाता है, औरोबिंदो क्यों नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करके लीडर क्यों नहीं बने, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। औरोबिंदो को ये क्वेश्चन अब एक्चुअली विवेकानंद के बारे में पूछ सकते हैं। विवेकानंद वाज आल्सो अ रेवोल्यूशनरी एट हार्ट टू बिगिन विद। और उन दिनों में क्या होता था, बंगाल में अखाड़ा होता था, जिम्नेजियम्स। तो हर जगह ब्रिटिश ट्रैक करते थे, पर वो जिम्नेजियम एक जगह था जहां पे ब्रिटिश स्पाइज उतने नहीं थे। तो औरोबिंदो वगैरह जितने भी थे, बारिन घोष वगैरह वगैरह जितने भी, विवेकानंद जी का खुद के भाई वगैरह बहुत सारे लोग थे, वो चिट्स ऑफ पेपर या मुंह से एक्सरसाइज करते करते बोल के निकल जाते थे कि यहां पे हम ये करेंगे। पर विवेकानंद और औरोबिंदो दोनों फाइनली दे रिजेक्टेड इवन दैट आइडिया ऑफ अ मटीरियल फ्रीडम। एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। उन्होंने और भी डीपर सवाल पूछा कि आप फ्रीडम की तो बात कर रहे हो, पर ये फ्रीडम है क्या? किससे फ्रीडम? किसका फ्रीडम? कहां से आया ये फ्रीडम? कौन इस फ्रीडम को भोग करेगा? और फ्रीडम के लायक हम हैं क्या? अगर धर्म नहीं रहा तो उस फ्रीडम का क्या करेंगे? That's why Aurobindo, you will know that for the last part of his life, he almost went silent. वो ज़्यादा किसी से मिलते नहीं थे. Because the deepest thinking about India, in a sense, has been done by Aurobindo.
Why is this country important? Why is this land important? आज देखिए सेंगोल के ऊपर भी हम लड़ाई कर रहे हैं. कल मैं टाइम्स नाउ पे कुछ सेंगोल पे बोल रहा था, ट्विटर पे मुझसे किसी ने बोला ये हिंदोल जरा सेंगोल पे बारे में क्यों बोल रहा है. तो इस लेवल पे आ गया है, हमारे राष्ट्र विचारधारणा इस लेवल पे आ गया है. देयर हैज बीन अ ट्विटराइजेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशनल कॉन्वर्सेशन. ये जो ट्विटराइजेशन हुआ है हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्वर्सेशन का, ये दिस इज वेरी डेंजरस, बिकॉज ऑल आवर चिल्ड्रन एंड आवर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इज दैट फ्लिपेंसी. हाउ विल दे अंडरस्टैंड डेप्थ? Therefore, today I want to urge you that your responsibility as educators and as an educational institution, ladies and gentlemen, has never been more important. Has never been more important. Because today, not only must you build great men and women for Bharat, you must build great men and women for the dharma of Bharat, for the inner self of Bharat, for the soul of Bharat, not just for material Bharat, but for dharmic Bharat. हम हमेशा कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति निर्माण करेंगे जो पॉलिटिकल भारत को आजाद करेगा, which is very important. Which is very important. But there is something beyond that. Neti, neti, not this, not this. There is something beyond that. And that beyond that, ladies and gentlemen, is in your hands. It is to create true Bharatiyas who live dharma, who just don't talk about dharma, who live dharma. I thank you for listening to me. Thank you, ladies and gentlemen. I humbly invite you to the dais, sir, to deliver the keynote address on Shift the Paradigm from Job to Service. I would also request Ms. Prerna Dahivade, Controller of Examination, Oro University, to felicitate sir. सभी आदरणीय और सम्माननीय विद्वद्गण, सज्जन और सन्नारियों, ये अच्छा हुआ कि किरण जी ने मुझे देर से बोलने की बात की, इसलिए भी कितने अच्छे श्रोता, इतने अच्छे वक्ताओं के श्रोता बनने का सौभाग्य मिलता है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें एक प्रावधान ऐसा है कि 1 से 5 की कक्षा तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ाना चाहिए. तो શરૂઆત હું એક ફકરો ગુજરાતીમાં કરીશ, કારણ કે મારી માતૃભાષા ગુજરાતી છે. ઓરો યુનિવર્સિટી શ્રી અરવિંદના નામ અને એના જીવન દર્શનની સાથે જોડાયેલી આ યુનિવર્સિટી, અને આજે જે આપણે એકત્રિત થયા છીએ એનો વિચાર, ચિંતન, ચર્ચા અને અમલીકરણ ચારને માટે છીએ. આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી મિત્રો. દેશમાં પરિસંવાદો તો ઘણા થાય છે, ગોષ્ઠી પણ ઘણી થાય છે, પરંતુ આ એક અલગ પ્રકારની ગોષ્ઠી છે જ્યાં મારા અને તમારાની વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી, સંવાદ છે. અને સંવાદના આધારે જ્યારે તમે વાત કરો ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે માતૃભાષા યાદ આવે. અને મને તો એટલા માટે પણ યાદ આવી કે હમણાં મારા પૂર્વ મિત્ર બંગાળની વાત કરતા હતા, ક્રાંતિકારોની, અને શ્રી અરવિંદની વાત કરી એમણે. એક ગુજરાતી ક્રાંતિકાર ગાંધીજીની પહેલાં પોરબંદરથી નીકળીને હોનોલુલુ થઈને વેન્કોવર પહોંચે છે, અને ત્યાં 1914ની આસપાસ જે ગદર મૂવમેન્ટ ચાલી, સૌથી મોટી ક્રાંતિકારી ચળવળ હિન્દુસ્તાનની આઝાદીને માટે, એમાં ભાગ લે છે. એ ગુજરાતીનું નામ હતું છગન ખેરાજ વર્મા.
અને માત્ર એ ક્રાંતિકાર નહોતો, પત્રકાર પણ હતો. સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં એમણે લાલા હરદયાલની સાથે ગદર નામના એક ગુજરાતી અખબારનું તંત્રીપદ સ્વીકાર્યું હતું. અને 1914માં ગદર જાન્યુઆરી 1914ના પહેલા અંકમાં એમણે જે તંત્રી લેખ લખ્યો, સંપાદકીય લખ્યો, એમાં એમણે લખ્યું હતું कि किसी भी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले अपनी दूध भाषा, मातृभाषा की आवश्यकता है. ठीक है, हम हिंदी में बोले, हम अंग्रेजी में भी बोले, लेकिन ये एक सचमुच में अपनी भाषा के प्रति केवल लगाव नहीं, केवल अहम-हमिका नहीं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. और इसीलिए मैकोले ने, यहाँ हम बार बार मैकोले का नाम लिया गया, मैकोले को अंग्रेजी और अंग्रेज सल्तनत दोनों की स्थापना के लिए यहाँ ये शिक्षा के सुधार करने पड़े. बहुत बड़ा अच्छा आदमी था, इतिहासकार था, साहित्यकार था, ये सब उनके गुण कीर्तन किया गया है बहुत सी किताबों में, हमारे लोगों ने भी लिखी है. लेकिन उनका आग्रह ये था कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश सल्तनत को यदि हमें स्थापित करना है, यदि हमें कायमी करना है, तो हमें उन पर अंग्रेजी थोपी जानी चाहिए, स्वाभाविक रूप से थोपी जानी चाहिए. और आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने तो कहा था कि हम गोरे बाबुओं का राज जब चल जाएगा, निकल जाएगा, तब हिंदुस्तान में काले बाबुओं का राज्य स्थापित होगा, और वो हमने तैयार किए होंगे. मैकोले ने कहा था और मैकोले सच निकला. चलो, ये इस बात से आगे मुझे आज के जो विषय है उस पर कुछ 7 या 8 छोटे से विचार बिंदु प्रस्तुत करने हैं. आज हम एजुकेशन फॉर लाइफ एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, इस विषय पर व्यापक रूप में चर्चा, चिंतन और क्रियान्वयन की पृष्ठभूमि के लिए इकट्ठा हुए हैं. इसी के अंतर्गत शिक्षा में बदलती हुई संज्ञाएं, जो आज आपने कहा मुझे विषय दिया हो, उसकी भी बात करनी है. जब केवल जॉब और सर्विस ही नहीं, उससे भी ऊपर पहुंचने की जो सज्जता है, उसका महामार्ग क्या है, शिक्षा क्यों, कैसी और किस तरह, ये तीनों आज के वर्तमान 21वीं सदी का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है. और इस यक्ष प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास कोई युधिष्ठिर नहीं है, हम स्वयं युधिष्ठिर हैं, हमें ही इनका जवाब खोजना है. तो मुझे आप माफ करेंगे, लेकिन मेरी दृष्टि से शिक्षा स्वयं एक आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, और वो जीवन कार्य है, मिशन भी है. मिशन के लिए मैं गुजराती एक शब्द प्रयोग करता हूँ, सेवा व्रत. और इसी सेवा व्रत के आधार पर जब ओरो यूनिवर्सिटी और अम्मा जी की यूनिवर्सिटी, अमृता यूनिवर्सिटी, दोनों मिलकर जब एक काम गुजरात की धरती पर, सूरत में, जहाँ श्री अरविंद स्वयं भी आए थे, जहाँ बड़ौदा से जिन्होंने अध्यापन किया, कार्य किया था, और जहाँ और भी बहुत से क्रांतिकार हुए, इस धरती पर इस प्रकार का परिसंवाद, इस प्रकार की गोष्ठी, उसमें मेरे जैसे छोटे से आदमी को बोलने के लिए परिमल जी और किरण जी ने कहा, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बोलना किसको अच्छा नहीं लगता. लेकिन इस कारण मैं कुल मिलाकर 8 विचार बिंदु प्रस्तुत करना चाहूँगा. एमए बना के मेरी मिट्टी क्यों खराब की, ये 100 साल पहले किसी पारसी लेखक ने एक उपन्यास लिखा था और उस पर फिल्म भी बनी थी. तो स्वाभाविक रूप से हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में इस पर यह वास्तविक प्रहार था. मैं जब पत्रकारिता का वर्ग लेता हूँ और फिर बाद में वो
अलग अलग चैनलों में जाते हैं मेरे छात्र, तो मुझे पूछते हैं कि साहब आपने सिखाया, इसमें तो कुछ नहीं आया, इसमें हमें बहुत अलग प्रकार का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जिंदगी के समस्याओं के पड़कार को हम झेले नहीं, इस प्रकार की शिक्षा को अलविदा करने का ये समय आ गया है। जिंदगी के सामर्थ्य का एहसास नहीं कराती किसी भी पद्धति के लिए ये मिट्टी खराब की, अर्थात हमारे जीवन मूल्य बोध तक पहुंचाने का कोई प्रचार ही नहीं हुआ, कोई प्रयास नहीं हुआ। जो कुछ श्रेष्ठ महानुभाव अवश्य हुए हमारे यहाँ, उन्होंने भले ही इस पद्धति से पदवी प्राप्त की है, जैसे कि श्री अरविंद या सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू या कोई भी, वहाँ गए थे तो ऑक्सफोर्ड में, वहाँ से प्राप्त की है शिक्षा। लेकिन ये शिक्षा केवल शिक्षा थी, उनकी निजी सज्जता अलग थी, वो स्वयं प्रकाशित थे। शिक्षा के कारण वो बड़े नहीं हुए, ये ब्रिटिश शिक्षा के कारण। तो गुलाम देशों में तो अधिकतम हमारे यहाँ अनुसरण होता रहता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति का जो अस्तित्व है, ठीक है, चर्चा होती कि ये हुआ, इतना हुआ, इतने लोग बड़े इकट्ठे हुए, ये बड़े बड़े लोग भी हो गए। लेकिन वास्तविकता है कि जो लोग बड़े हुए वो अपने ढंग से हुए हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति को यदि हम बदलेंगे नहीं, गुणात्मक रूप तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हम ये युवा छात्रों का आत्मविश्वास जो है उसको खो बैठेंगे। गुलाम देशों में तो विशेष रूप से ये कहना है, ये घातक है। हमारे यहाँ पूर्व में गुरुकुल पद्धति थी, यहाँ कपिल जी ने भी बताया कि ये जो जिस प्रकार का वहाँ अध्ययन होता था, अब किसी कृष्ण ने जो अध्ययन किया करते थे, किसी सुदामा ने जो अध्ययन किया करता था, किसी युधिष्ठिर या अर्जुन ने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरी मिट्टी क्यों खराब की है मैं बना के, गुरुकुल में। तो ये उसी शिक्षा पद्धति, उसकी आलोचना नहीं क्यों थी? क्यों? अब इसी क्यों का आत्मचिंतन हो रहा है। मैं निराशावादी नहीं हूँ। ठीक है, आज शिक्षा प्रथा में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियों के साथ साथ जिस प्रकार के नए अध्यापक, नए सज्ज अध्यापक, नए छात्र अपनी आंखों में सपना लेकर निकले हैं, उसे हमें उपेक्षित करना नहीं चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, ये हमारी इस बार की उद्घोषणा होगी। और इसीलिए मैं ये क्यों का जो आत्मचिंतन हो रहा है कि शिक्षा क्यों कैसी, सांप्रत और पुरातन शिक्षा पद्धति के अच्छे लक्षण को समन्वित करके एक नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का प्रयास आज भारतवर्ष में हो रहा है। भले ही हम नई पॉलिसी की आलोचना करें, ये है, ये नहीं है, ये है, जितना भी है वो है। और जो है वो किस प्रकार का है? 102 पृष्ठों में 27 विभागों में यह नीति प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्राथमिक से उच्च शिक्षा में किस प्रकार का गुणात्मक सुधार होगा इसे बताया गया है। ये ठीक है कि इसके पूर्व 1986, 1988, 1992 तब भी प्रयास हुआ था। और यहाँ इसके अतिरिक्त जो विशेषता है, वो विशेषता ये है कि यहाँ भारतीय मूल्य निष्ठा से बद्ध शिक्षा का संकल्प है। ये संकल्प की आवश्यकता है आज। बिना डरे, बिना जूझे, बिना निराश हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये इसमें 60 बदलाव की भी बात है। और ऐसी आशा व्यक्त की गई है कि आगामी 10 वर्ष में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER वो 100% हो जाएगा। अब ये ठीक है कि कुछ लोग कहेंगे कि ये ख्वाब है, तो ख्वाब है तो ख्वाब रहने दो, लेकिन ख्वाब का भी कभी कभी सपने भी सच होते हैं।
तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मुझे ये कहना था। सबसे पहला जो चिंतन बिंदु है, मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण तो है हमारी स्पष्ट वैचारिक भूमिका, स्पष्ट और वैचारिक। शिक्षा और जीवन दोनों प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक अभिन्न संवाद की प्रक्रिया है। जीवन है तो शिक्षा अनिवार्य है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती और वसुदैव कुटुंबकम, ये एक में विचारों की अभिव्यक्ति के स्वाधीनता का आकाश, और दूसरे सूत्र में समग्र वसुधा से जुड़े मनुष्य और समग्र प्रकृति का भी परिवार की तरह सोचना। मैं केवल व्यक्ति नहीं कहूँगा, प्रकृति भी। और तभी ग्लोबल सिटीजन की एक सही और सर्वोत्कृष्ट परिकल्पना साबित होगी। इसे संवर्धित करने के लिए कैसी शिक्षा चाहिए? कुछ विचार बिंदु में आगे बढ़ा रहा हूँ। एक, शिक्षा को भावात्मक रूप से, मैं बहुत गंभीरता से ये कह रहा हूँ, शिक्षा को भावात्मक रूप से मातृशक्ति के साथ जोड़ना होगा। अपनी माता, प्रिय देश माता और फिर जगन माता, इसी की अभिन्नता को प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है, पुरुष समाज में ये थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये करनी पड़ेगी। हमारी वर्तमान शिक्षा में स्पर्धात्मक स्वार्थ और आर्थिक प्रभाव अभी सर्वोपरि हो गया है। वहाँ भावात्मक स्थिति का ऐसा निर्माण करना पड़ेगा। दूसरा विचार बिंदु, हाँ, यह विचार केवल भौतिक नहीं है, शारीरिक भी नहीं, लेकिन तमसो मां ज्योतिर्गमय की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिकता भी है। मातृशक्ति का इसी स्वरूप भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में मुखरित हुआ था। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, श्री अरविंद ने भवानी मंदिर नाम की एक परिकल्पना की, भगिनी निवेदिता ने काली द मदर नाम का एक छोटा सा विचार दिया, और वर्तमान में ये माँ आनंदमयी देवी जी और बाकी सबका जो संदेश आता है, ये सभी इसके जीवंत दस्तावेज है। श्री अरविंद ने अपने युवा काल में अपनी पत्नी मृणालिनी देवी को जो पत्र लिखे थे, उन दिनों में प्रकाशित हुए थे, आज से 17 साल पहले, 17 पहले, यहाँ गुजराती में भी। वो उसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की आराधना के साथ स्वदेश माता का संकल्प में जोड़ रहा हूँ। हमारी नई शिक्षा पद्धति में मनुष्य निर्माण का काम इसी रास्ते पर प्राप्त होगा और सफल बनेगा। तीसरा विचार बिंदु, जीवन की सभी क्रिया, प्रतिक्रिया और प्रक्रिया, इसमें अलगाव से विपरीत एक शब्द है सहयोग। विवाद के बजाय संवाद। तो इंटीग्रल मनुष्य जो विखंडित नहीं है, एकात्म है, उसकी भी मूलभूत समझ शिक्षा के द्वारा संवर्धित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दिमाग के लिए बौद्धिकता, मतलब IQ, हृदय के लिए संवेदना EQ, और पेट के लिए पुरुषार्थ, मैं उसको HQ कहता हूँ, हार्ड वर्क। ये पृथक नहीं है, अभिन्न है और एक दूसरे से अंतर्बद्ध है। क्या हमें शिक्षा की तमाम विधा, विनयन, विज्ञान, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, समाज विद्या, पत्रकारिता, राजनीति, कानून, कला, टेक्नोलॉजी, सभी में इसकी सोच को सम्मिलित करने की हमें तत्परता है, क्षमता है, सज्जता है, करनी होगी। चौथा जो विचार बिंदु है, वैश्विक शिक्षा में रूपांतरण का इसका चतुर्थ सोपान है। दुनिया यदि फुटबॉल सी हो गई है, और ऐसा हम स्वीकार करते हैं,
तो शिक्षा के कुछ समान क्रियान्वयन होना चाहिए, केवल हिंदुस्तान में नहीं, भारतीय उपखंड में भी, एशिया में भी। क्योंकि तभी हम नालंदा और तक्षशिला की बात करते हैं, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी थी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता क्या है वहाँ शिक्षा मिलती थी। अर्थात ये प्रयोग असंभव नहीं है, तो वैश्विक विद्यालय होने चाहिए। इसके लिए भले ही कुछ सीमित देश हम पसंद करें, ग्रेटर और यूनाइटेड एशिया, ये विचार हमारे यहाँ स्वातंत्र्य संग्राम के दौरान बहुत कुछ आगे बढ़ गया था। डॉक्टर रास बिहारी बोस जैसे परम विद्वान जो 30 से ज़्यादा भाषा जानते थे और जापान में रहते थे, ऐसे जलावतन लोग, उन्होंने ये ग्रेटर एशिया की बात शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार होनी चाहिए इसका भी विचार किया था। तो ये एक हमें उनका अलग स्वरूप है। हमारे यहाँ ऑनलाइन, अब ऑनलाइन का कुछ लोग ज़रा आलोचना करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन भी बहुत कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया आज का सबसे सशक्त माध्यम है और इनका उपयोग बिना हिचकिचाहट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण हम वैश्विक नागरिकता की ओर चलें। पांचवा जो है, शिक्षा की सभी शाखाओं में, भले ही वो अलग अलग परिणामों की प्राप्ति हो, अनिवार्य रूप से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की गुणात्मक यात्रा का सम्मिलित लक्ष्य होना चाहिए। छठवां, एक अछूते विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। शायद संविधान निर्माताओं की तो सोच थी कि वहाँ ज्ञाति, जाति, संप्रदाय, आर्थिक के अभाव से मुक्त राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व ही संसदीय लोकतंत्र, इसी कारण संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। आज परिस्थिति विपरीत है। इतना बड़ा महान संवैधानिक देवालय जब बनता है तो उसके विरोध में निजी स्वार्थ के कारण किसी को इस प्रकार सक्रिय नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि हमें राष्ट्रवादी विचारधारा से हमारे जनप्रतिनिधियों को भी शिक्षित करना है। ये नहीं हुआ तो हमारी शिक्षा का यही एक कारण है कि हम कहीं ना कहीं हम पीछे रहे हैं। तो इस प्रकार का 2-3 सवाल था। मैं अंत में केवल एक वाक्य, एकाध विधान करके पूरा करूँगा। प्रश्न ये है कि हमारी कैसे करेंगे ये? कुछ लोग पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से इतने उबे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे मुग्ध है कि वही होना चाहिए, और वही या सही, इसके बीच में हमें बीच का रास्ता निकालना है कि प्राच्य और पाश्चात्य पद्धति का कोई सुभग मिलन हो सकता है, सोचना चाहिए। ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का पिंजर तो स्वर्णिम सा है, लाख कोशिशों के बावजूद हमें उसे छोड़ सकते नहीं, अभी भी छोड़ा नहीं। इतिहास की 2 दुर्घटना, एक प्लासी की लड़ाई और दूसरी 7 फरवरी 1835 को थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की नोंद, मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, ने हमारी शारीरिक मानसिक शक्ति को साम्राज्यवादी गुलामी में ढकेल दिया है। मैकॉले का इरादा क्या था? I must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions when we govern, whom we govern. A class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in moral and intellect. अब पहला विधान उनके बड़ी जो नोट्स का, जहाँ हमें यहाँ प्रशस्ति गान होता है, इसमें है। दूसरा उसने जो कहा था ये भी सोचने लायक है। क्या
a single shell of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. इसका मतलब कि हिंदुस्तान में कुछ हुआ ही नहीं, अरेबिया में कुछ हुआ नहीं। साहित्य तो हमारा है, भाषा तो हमारी है, हम सर्वोच्च हैं। उसी के आधार पर उन दिनों से 1880 से आज तक वो यही सोचते रहे। और ये ऐसी ही एक दूसरी नोंद एल्फिंस्टन साहब ने की थी। हमारे यहाँ मुंबई में बहुत एल्फिंस्टन कॉलेज है, हम एल्फिंस्टियन है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं बड़े गौरव के साथ। वो भी मैकोले और एल्फिंस्टन के महान गुणों का जिक्र नई पुरानी पुस्तकों में मिलता है। हालांकि वे बेशक उत्कृष्ट साहित्यकार और इतिहासकार थे भारत में, लेकिन भारत में वो मैकोले कानून के अफसर बनकर आया था। न वो संस्कृत जानता था न फारसी जानता था। लॉर्ड बेंटिक उसका गुरु भाई था। दोनों ने भारत में कौन सी शिक्षा के लिए अनुदान देना चाहिए, देखिए आर्थिक बात हो जाएगी, अनुदान उसका निर्णय लिया और प्राच्यवादी ओरिएंटल का तिरस्कृत करके अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन इसी उद्देश्य पर काम करते थे। उद्देश्य क्या था? इन्वर्टेड कॉमा में, भारत में अपनी अफसरशाही के लिए सस्ती दरों पर कर्मचारी हासिल करना। शिक्षा का ये परिणाम उनको चाहिए था और ये हुआ भी। और दूसरा भी उसको चाहिए था कि हम ईसाई धर्मांतरण के लिए शिक्षा पद्धति का एक धारदार उपयोग करेंगे। ये भी हुआ। तो मैकोले और ट्रेवेलियन ने साहित्य शेक्सपियर को इसमें शामिल किया। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। क्यों किया? तो इसीलिए उनके ही शब्दों में शेक्सपियर को इसीलिए लिया क्योंकि उसमें प्रोटेस्टेंट बाइबल के ठोस सिद्धांत शामिल थे, साहित्यिक दृष्टि से नहीं और दृष्टि से। तो भारतीय विद्या तो अलग बात है, यहाँ परा है, अपरा है, अध्यात्म है, सांसारिक ज्ञान भी है। श्री अरविंद ने वही कहा कि शिक्षा अपनी आत्मा के भीतर की सर्वोत्कृष्ट शक्ति को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। हम इस प्रकार प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे। वही बात गांधी जी ने हिंद स्वराज में भी की है, टागोर ने की है, विवेकानंद ने की है, ज्योतिबा फुले तक ने भी किए, जिन्होंने हंटर कमीशन के समक्ष एक निवेदन किया था शिक्षा पद्धति के बारे में। आज अंतिम बात यही है कि हमारे चिंतन को कर्म के साथ जोड़ना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए और उसके साथ साथ समग्र शिक्षा में राष्ट्रे जाग्रयाम वयम की धारणा मुखरित करनी पड़ेगी। बिना राष्ट्र कुछ भी नहीं हो सकता। बिना राष्ट्र भावना किसी भी प्रकार की पद्धति को सर्वोत्कृष्ट बना नहीं सकता और इसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। और अंतिम एक विधान मुझे लियोनार्ड सिल्क का याद आता है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय संपादक परिषद थी, उसमें आया था, अमेरिकन बड़ा पत्रकार और विवेचक था। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, यूनिवर्सिटी के बारे में कही थी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बाकी तो ठीक है, आर्थिक आधार हो, आर्थिक अच्छी सबकी वो उनको मिल जाए अच्छी बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको दो शब्दों का ख्याल रखना पड़ेगा। दो, उन्होंने कहा कि ट्रूथ सीकिंग, सत्य को देखिए, और दूसरा ट्रूथ टेलिंग, सत्य का उद्बोधन करिए। ये सबसे बड़ी बात है। हम सत्य देख तो हैं कभी कभी, लेकिन ध्रुव राष्ट्र की तरह हमें आंखों की पट्टी बांधकर हम जब चलते हैं, होगा उसका होगा, हमें क्या है। तो सत्य का उद्बोधन करना पड़ेगा। इसी सत्य के आधार पर भारतीय शिक्षा पद्धति का अभी जो जितना हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए ये भी सब करेंगे क्योंकि ये आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता के लिए इस प्रकार का आज सामूहिक चिंता, चर्चा, चिंतन
तीनों हुआ, अब इसका क्रियान्वयन किस प्रकार हो ये भी हम सोचें, ऐसी मेरी विनंती है। धन्यवाद।